the first week of January. सर आइटम नंबर 17 में एविडेंस की कॉपी फाइल करना सर। 17 नंबर पे केस लगा है, एविडेंस की कॉपी फाइल करना, एविडेंस हॉस्टाइल। Item number 71. Item number 71. Applicant is in jail and he is of age 60 years. Item number 2, application suspension of sentence है 9th of January तक के लिए extension. Item number 2, First week of January. First week of January. item number 220 lordship 482 petition है। 132 में वेरियस टाइम लिस्टेड हुआ है केस। 11 केस क्रिमिनल अपीलें हैं, कुछ लेडीजे हैं और कुछ 87 ईयर्स के ओल्ड पर्सन हैं और 2 माह से जेल में है लॉर्डशिप। 48 पर्सन को कन्विक्टेड हुआ है लॉर्डशिप। 132 नंबर में कई टाइम पर लगा लेकिन आज तक नॉट रीच में रह गया। Item number 220 lordship, it's a 482 petition challenging the charge has been framed by the Lund trial report। माइनर आइटम नंबर 2 एप्लीकेशन है, इसकी मदद की डेथ हो गई है, कल लगा हुआ था, आपने रिपोर्ट कॉल करके आज में रखा हुआ था 263। Lordship, can I make a humble prayer, sir? My item is listed at 164.1. Lordship, this is a case, Lordship, which was listed on 312. The counsel for the respondent, though he has not filed any wakalatnama, he made a statement that this should be linked with the case which is listed at 164. I moved an application for delinking because both the cases in 164 item number 164, the challenge is to the framing of charge. My only application is that I should be given an opportunity because I was not given an opportunity to cross-examine the witness. So, Lordship, that's a different issue, and wrongly this statement has been made. My application for delinking may be considered, and that case be delinked, and I should be heard. 164.1 148, आइटम नंबर 148, एक्यूज 2 महीने से करीब जेल में है और चालान में बहुत त्रुटियां हैं माय लॉर्ड, क्वांटिटी ऑफ लिकर भी नहीं बता पा रहे हैं। Not agency. माय लॉर्ड आइटम नंबर माय लॉर्ड माँ किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है। माय लॉर्ड आइटम नंबर 63 67 में क्रिमिनल अपील है माय लॉर्ड और 2 तारीख तक की बेल पर है। ये ले मिलर्ड आइटम नंबर 1, मिलर्ड आइटम नंबर 137 वुमेन लेडी है मिलर्ड और मिलर्ड IPS की लेडी और ऑलरेडी 1 साल की सजा 8 महीने काट लिया है मिलर्ड। 135 आइटम नंबर मिलर्ड, मैं बोल रहा हूँ 135 मिलर्ड। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। नो मिलर्ड। नेक्स्ट माय लॉर्ड आइटम नंबर 167 मेरा एप्लीकेशन है मिलर्ड, 28(2) की एप्लीकेशन है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिलर्ड, ऑलरेडी 1 ईयर। सो यस माय लॉर्ड आइटम नंबर 1, माय लॉर्ड आइटम नंबर 167 माय लॉर्ड, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है, दोनों पार्टी प्रेजेंट है। 138 का मैटर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, आज 167 में लगा सर। all the amount has been paid my lord। you are on bail no my lord, punishment warrant has been issued my lord। again, your appeal has been dismissed by the जेल में नहीं है सर, लेकिन पनिशमेंट वारंट इशूड है सर, 3 महीने से मेरी पेंडिंग है, आपके यहाँ लगती है लेकिन नॉट रीच हो जाती है सर। दोनों पार्टी आई है। after the dismissal of your appeal by the session court, yes my lord, whether you surrendered before the session court my or lord, undergoing jail, I am not surrender my lord, my lord, so many judgment my lord, my lord, so many judgment and revision not pending. मिलर्ड आइटम 135 My lord, item number 141, my lord. Item number 141, my lord. 4 साल की सजा है, 4 साल की। अरे नॉट एजेंसी। मिलर्ड आइटम 820 NDPS का मामला है मिलर्ड, ऑलरेडी 6 ऑलरेडी हाफ के सेंटेंस कस्टडी हो गई मिलर्ड। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। I have asked you for number of times, you always mention your request in writing. लॉर्डशिप आइटम नंबर 264, Not agency. आइटम नंबर 264 लॉर्डशिप। लिख के दीजिए। Mention memo. Law. Yes, Sir. and number 1. माय लॉर्ड आइटम नंबर 151 में माय लॉर्ड हमने आई फाइल द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल रिवीजन माय लॉर्ड, विड्रॉवल की एप्लीकेशन फाइल की है माय लॉर्ड मैंने। माय लॉर्ड आइटम नंबर 151 में विड्रॉवल की एप्लीकेशन फाइल की है विद एफिडेविट माय लॉर्ड। Who is for government? By dear.
सर 261 पे एक लगा है। That's it. Order on application of withdrawal. एक नंबर सर, एक नंबर आप चालू हो गया। हाँ, वो कोई पूछ रहा था। क्या पूछना? Application for withdrawal is allowed. Just reading. Dismissed and withdrawn and not missed. सर व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 132 में सर, 132 में व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसमें महिला लिख के दिया हुआ है, महिला अधिवक्ता है सर, और हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और लकवा सबकी मरीज है, सबकी पूरी वेरिफिकेशन भी माननीय द्वारा करवा लिया गया है। श्रीमती शिवा मिश्रा का पुलिस वेरिफिकेशन जेल में है सर, इसलिए मेरा निवेदन सुन लिया जाए सर, और टेम्परेरी बेल के लिए है सर, सुन लिया जाता है उसमें 132 में सर। Number 1. May I seek my lord's indulgence for item 202, my lords? There is an extreme urgency, my lords. You give it. I'll submit it, my lord. Yes. I'm appearing in serial number 1, my lords. I'm appearing in serial number 1. Yes. Yes. My lords, this is the first anticipatory bail application. The applicant is 70-year-old heart patient. He has been charged with commission of offence under section 467, 468, 471, 420, 120B and. अरे भाई देखिए, आप लोग शांत करिए। Yes. My lords, the applicant is a 70-year-old heart patient, my lord. This is the first anticipatory bail application. He has been charged with section 420, 467, 468, 471, 120B and section 34. My lords, if may come to annexure A1, which is at page 9, my lords. This is the FIR, my lords. And the name of the accused persons are at paragraph number 7, my lords. Bhanu Pratap Singh, Vishal Singh Lodhi, Bhanu Kumar and Ek Agyat. I am representing Bhanu Kumar, my lords, which is at serial number 3. May I read the FIR, my lord? मुझे थाना प्रभारी महोदय हटा ने दिनांक 22 जुलाई 2022 को आवेदक विशाल पिता धनीराम पटेल उम्र 81 साल निवासी ग्राम सोजना थाना हटा का एक लोकल शिकायत आवेदन क्रमांक 228/22 अग्रिम जांच हेतु दिया था। उक्त शिकायत आवेदन की जांच मेरे द्वारा की गई। अभी तक की शिकायत जांच पर संकलित की गई साक्ष्यम का परिशीलन किया गया, जो पाया कि अनावेदक भानु प्रताप पिता तोडर सिंह लोधी निवासी सोवेंसो बेईमानी की नियत तथा सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनावेदक भानु कुमार बड़कुल, दिस इज द एप्लीकेंट, भानु कुमार बड़कुल इज द एप्लीकेंट, के पास आकर उसे बताया कि उसके मौसी के लड़के विशाल सिंह पिता धनीराम सिंह लोधी की ग्राम सोजना की कृषि भूमि खसरा नंबर सोवेंसो वह उसे बेचना चाहता है। तो अनावेदक भानु कुमार बड़कुल ने उक्त भूमि खरीदने हेतु उसे कहा कि विक्रेता विशाल सिंह से उसे मिलवाओ। तो भानु प्रताप सिंह लोधी ने विक्रेता विशाल सिंह लोधी से उसे मिलवाया और फिर उक्त जमीन क्रय करने का सौदा तय कर लिया गया। अनावेदक भानु कुमार बड़कुल क्रय की जाने वाली उक्त जमीन का मौके पर जाकर ना तो देखा, ना ही उक्त भूमि का वास्तविक मालिक की पतासाजी की और ना ही उक्त क्रेता सावधानी में वर्णित नियमों का पालन ना करते हुए उक्त भूमि अपनी पत्नी क्रेता सरोज रानी जैन पिता पति भानु कुमार जैन सोवेंसो अपनी बहन क्रेता श्रीमती सुषमा जैन पति निर्मल चंद जैन निवासी सोवेंसो। इसी क्रेता ने अपनी बहन सुषमा को खसरा नंबर सोवेंसो एवं अपनी परिचित श्रीमती पुष्पा जैन पति शरद कुमार जैन सोवेंसो को उप पंजीयक कार्यालय हटा जिला दमोह से विक्रय करवा दी गई। These are the it is a typographical mistake, they have purchased the property. Yes. हेलो, जांच प्रतिवेदन में ये आया है कि I am not finished at the moment. Now, my lords, as per the FIR, my lords, if I am reading further, उपरोक्त दो क्रय की गई उपरोक्त जमीन क्रेतागण ने अनावेदक भानु कुमार बड़कुल के विश्वास दिलाने पर कि यह जमीन का सत्यापन भानु कुमार बड़कुल ने कर लिया है, इस बात का विश्वास करके क्रय करना जांच पाया गया। My lords, the concerned property in question has been purchased by the wife of the applicant, sister of the applicant, and another purchase of the applicant. Now, technically, applicant stands with them. The offence that has been alleged against the applicant, he is the victim of those offence, and the main accused are the two persons, Bhanu Kumar Singh Lodhi and Bhanu Pratap Singh and Vishal Singh Lodhi. These are the two main accused, my lords. And it is right. Yes.
Ma'am, sir, it is specific finding in the FIR that we are not having the money. Already I have heard you, yes. मालूट सभी रजिस्ट्रियों में गवाह के रूप में इनके साइन है, इन्हीं ने सबको विश्वास दिलाया कि ये जमीन है, उनको खरीदना चाहिए, खरीदा जाना चाहिए सभी क्रेताओं को, और लगभग 26,84,928 रुपए का मामला टोटल है, नेम्ड FIR है मालूट। तो 438 तो He himself is the purchaser. Yes, my lord. नहीं, ये परचेसर नहीं है, लेकिन My wife and my sister and another के नाम से एक प्लॉट purchaser, my lord. And लिया है। FIR categorically states, my lords, that I am not in possession of the money, my lords. The money is with the first two accused, my lords. So it is quite shocking to see that they are charging me only simply because I signed as a witness, my lord. Yes. There is no specific allegations against me, my lords. Yes. भानु कुमार बड़कुल के कहने पर ही चारों ने खरीदा है, चारों को स्टेटमेंट में भी आया है कि इन्हीं के कहने पे हमने खरीदा है, चारों में गवाह के साइन, गवाह के रूप में बड़कुल के साइन है। मतलब he himself is not the purchaser, he is the attesting witness of the sale deeds. My lord, Executed in favor of the other purchasers. इसी ने खरीदवाया है सभी को, ये बोल करके ये जमीन। I am the victim, my lord, because it is my loss. Any criminal background? No, my lord. No, my lord. Criminal background. The wife has also purchased one of the plot. My lord. It shows that he has also been cheated by the. Yes, my lord. Yes, like. क्या नाम है? अभिनव श्रीवास्तव. Shri Abhinav Srivastava, learned counsel for the applicant. Shri Baidi Yadav, learned government advocate for the respondent state. This first anticipated bail application under Section 438 of CRPC has been filed on behalf of the applicant for grant of anticipated bail in connection with crime number 399/22 of Piasata district Jammu for commission of under section 420, 467, 468, 471, 120B/34 of the IPC. Next, as per the prosecution story, on 22/7/2022, भानु प्रताप लोधी approached Bhanu Kumar Badkal and asked him that Vishal Singh Lodhi, who is the owner of agriculture bhumi bearing survey number 397/1, comprising area 4.60 hectares, is his cousin and he wanted to sell the same. At this, applicant told him to call the real seller. At this, Pratap Singh came along with Vishal Singh Lodhi. Full stop. He along with them went on the spot and without making any verification about the actual owners of the land, purchased some land for his wife, and some land in the name of his wife Sarojrani, sister Sushma Jain, Full stop. Money was paid to the Vishal Singh Lodhi. Later, a complaint was made that Bhanpratap Singh Lodhi has collected the entire
shall amount from the so-called Vishal Singh Lodhi. Ultimately, किसका है ये? सीज करिए, इसको जब्त करिए। किसका है? इसको बुलाओ, जब्त करो इनका। किसका है? It was found that the person who had executed the shell deed was not real Vishal Singh Lodhi, but someone else had imposed himself as the Vishal Singh Lodhi. Fire was registered. Next. Cabinet counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed any offence. He is innocent. He has been falsely implicated. He himself had been cheated by the so-called Bhanu Pratap and Vishal Singh. The only allegation against him is that he did not make verification about the real owner, and that is the only fault. But same cannot be assumed as a offense. Therefore, it has been said that applicant be released on anticipated bail. He is 70 years old with no criminal background. He shall abide by all the conditions whatsoever imposed by the court. The other hand, learned counsel for the state has opposed grant of bail to the applicant. लिखिए, looking to the facts and circumstances of the case, I am of the view that it is a case in which custodial interrogation of the applicant is not warranted. Therefore, this anticipatory bail application under section 438 of CRPC filed on behalf of applicant is allowed, subject to following conditions. Not CC today, my lords. CC today, my lords. Next. मिलट हमारे अगेंस्ट 354 का 354 घा 294 323 आईपीसी एंड सेक्शन 7, 8, 11, 12 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया है मैडम। यस मैडम। यस माइलॉर्ड 30/3/2022 को हमारे अगेंस्ट में पॉस्को एक्ट और 354 का के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया है मैडम। और 22/11/2022 को हमको इस संबंध में जानकारी होती है कि हमारे अगेंस्ट में कोई मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया है मैडम। लड़की की उम्र माइलॉर्ड इसमें 17 साल 1 माह है और लड़के की उम्र 21 साल है माइलॉर्ड। हमारा पुराना संबंध रहा, परिचय रहा है। इनके परिवार वाले इससे नाखुश थे हमारे, इस कारण से उनके द्वारा हमारे अगेंस्ट में ये फॉल्स रिपोर्ट दर्ज की गई माइलॉर्ड इसमें। और जो एज ए प्रोसिक्यूशन स्टोरी आप देखेंगे माइलॉर्ड, पूरी घटना इनने पब्लिक प्लेस में बताई हुई है ऑलरेडी। हम तो थे ही नहीं माइलॉर्ड। इनका बताना है बस में ले गए, फिर बाइक में ले गए, ये पूरा पता है। यस। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है माइलॉर्ड हमारे अगेंस्ट में। यस। यस। आपका चालू नहीं क्या? 16 ईयर एज है। 164 मैं पढ़ देता हूँ। 164 में घटना दिनांक 30/3/2022 की है। मैं प्रतिदिन रीवा पढ़ाई करने जाती हूँ। मैं हर दिन की तरह रीवा जाने के लिए बस में बैठी थी, तभी मेरे गांव का धीरज द्विवेदी बस में मेरे बाजू में आकर बैठ गया और गलत नीयत से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि मुझसे बात करो, नहीं करोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबको खत्म कर दूंगा।
तब मैं बस में डर की वजह से कुछ नहीं बोली। फिर मैं रिवर्स में बस से उतर गई। तब वह मेरा पीछा करने लगा और स्कूल के पास पुनः मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर मेरे कॉलेज के शिक्षक को फोन लगाकर यह बोला कि आज ज्योति कॉलेज नहीं आ पाएगी। धीरज मेरी घड़ी तोड़ दिया था और मेरा मोबाइल छुड़ाने लगा था तथा मेरी सहेलियां आ गई थी और बोली ऐसा क्यों कर रहे हो। तो धीरज बोला कि तुम लोग बीच में आओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा सबको बता दूंगा। उसके बाद धीरज मुझे घसीटते हुए नया बस स्टैंड तक ले गया तथा मैं चिल्लाने लगी। तब वहां उपस्थित लोगों ने उसका कारण पूछा। तब धीरज ने बोला कि यह मेरी बहन है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जबरदस्ती बस में बैठाकर घर ले गया। उसके बाद मेरे भैया ने मेरे सर के नंबर से धीरज को फोन लगाकर पूछा कि मेरी बहन को कहाँ लेकर गए हो। तब मैं चीखी और चिल्लाई कि मुझे गढ़ लेकर आ गया है। उसके बाद धीरज ने मुझे मोटरसाइकिल से बैकुंठपुर तक छोड़ दिया और बोला कि यदि किसी को बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को मार डालूंगा। उसके बाद मैं अपने घर वालों को सारी बात बताई। उसके बाद हम लोग रीवा में कार्रवाई किए, किंतु उसके द्वारा यह बोला गया कि घटना बैकुंठपुर से प्रारंभ हुआ है, अतः बैकुंठपुर में शिकायत करने की सलाह दिया गया। तब कल दिनांक 31/3/2022 को थाना बैकुंठपुर में जाकर घटना की शिकायत किए। आज दिनांक को मैं अपने मम्मी भैया तथा पुलिस वाली मैडम के साथ न्यायालय आई हूँ और एक आई विटनेस भी है शिवानी सेन जो साथ में थी, उसकी भी स्टेटमेंट है। Yes, not inclined for anticipatory. कॉलेज स्टूडेंट है, दोनों का अफेयर है ऑलरेडी। लिखिए श्री रविंद्र साहू मैडम। लाइए not inclined. यस Side on merit. यस मैम। देखिए श्री रविंद्र साहू, learned counsel for the applicant. Shri Badi Yadav, learned government advocate for respondent state. This anticipated application under section 48 of CRPC has been filed on behalf of applicant Dheeraj Guru for grant of anticipated bail in connection with crime number 119/22 of PS Bakunthpur district Eva for commission of offence under section 354A, 354D, 294, 323 of IPC and section 7/8 and 11/12 of the POCSO Act 2012. As per the prosecution story on 1/4/2022, 16-year-old prosecuted 16 years along with her mother मार्कशीट वगैरह है and 16 years uncle appeared at CS and filed an application writing 17 साल से कम है। alleging that अप्रैल में हो जाएगी 18 की। she नहीं नहीं she डॉक्यूमेंट student of इसके हिसाब से 17 की कंप्लीट information technology कंप्लीट and daily used to go from her home to Riva by bus. Full stop. On 33/2022 at around 10 a.m. when she climbed in the bus, Dheeraj Dwivedi of his village entered into bus and sit by her side and cart-hold her hand with bad intention. Stop. He threatened him that if she will not talk him, he will eliminate his parents and brother. Stop. Due to fear, for being afraid of his threat, he did not speak any word. Full stop. Thereafter, when she got down from the bus at Subhash Chowk and was proceeding towards his college, Dheeraj Dwivedi chased her
and again cut hold around hand near PK school. Stop thereafter, Dheeraj made a call to her teacher Aman Sen and told that today she will not come, that today prosecutors will not attend the class, and forcibly took her new bus stand and made a forcible attempt to get her sit in the bus. At this, when he raised alarm, people gathered there and after as to by age, teaching at this, Dheeraj told them all that she's her sister and is mentally ill. Thereafter, he forcibly took her and stopped her at Bakundpur Bazaar and threatened that if she narrated the incident to anyone, he will eliminate all family members. FIR by the register. Next. Learned counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed an offence. He is innocent. He has been falsely implicated. He has love affairs with the prosecutors. Yes, ma'am. A FIR has been lodged against him by the prosecutors at the behest of her mother, father, and other family members. There is no criminal background. Therefore, it has been prayed that he be released on anticipatory bail. Next. Okay, I have gone through the FIR and material collected against the present applicant have been taken into consideration the desperate act of teaching and attempting and an attempt to outrage the modesty of the girl, minor girl, and touching her hand without and touching her hand. I am of the view that it is not a fit case for grant of anticipatory bail. Therefore, this first anticipatory bail application filed on behalf of Dheeraj Dwivedi is dismissed. First bail application है 438 of CRPC lordship. Offence under section 420-34 of IPC lordship. Yes. लॉर्डशिप हमारे ऊपर एलिगेशन ये है कि हमने दो प्लाटों के पैसे ले लिए और प्लाट देने से बाद में मना कर दिया. ये एलिगेशन रजिस्ट्री नहीं करवाई लॉर्डशिप. लॉर्डशिप हमारा कहना ये है लॉर्डशिप कि हमारा जो किसान है उससे अनुबंध निरस्त हो गया था. हमने पेपर पब्लिकेशन भी कराया है. जिन जिनके पैसे जमा है वो हमसे पैसे प्राप्त कर सकते हैं. वही ट्रायल वाइज एमएफसी है लॉर्डशिप. 1,02,000 रुपए का एलिगेशन है. ठीक है, इनके पैसे माय लॉर्ड इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है. अच्छा लॉर्डशिप. और इनकी जो एग्रीमेंट कंपनी है HN स्टार लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस नाम से इसने रसीद लिया, प्लाटिंग की, लोगों से पैसे लिए. अभी तक 3,92,000 4 लोगों से ले चुके हैं. इनका जो ओरिजिनल जो ओनर है लैंड के, जसवंत सिंह, इन्होंने लैंड बेची है ये नजीम खान को, और नजीम खान ने 20 लाख का एडवांस दिया. जब वो चेक बाउंस हो गया तो उन्होंने वो एग्रीमेंट निरस्त कर दिया. इनसे कोई लेने, इन्होंने अच्छा इनका का कार्यक्रम. हाँ लॉर्डशिप जो ये कंपनी है उसके हम एम्प्लॉय थे और कंपनी ने पेपर पब्लिकेशन कराया लॉर्डशिप. वो पूरे पैसे वापस करने तैयार हैं जिनके पेंडिंग. नो लिखिए नहीं लॉर्डशिप, इसमें हम पैसा वापस करने तैयार हैं लॉर्डशिप. हम तो एम्प्लॉय थे उनके. कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है कि आप बिना किसी उसके कैसे पैसे ले रहे हैं लोगों से. लॉर्डशिप हमारा अनुबंध हुआ, हम उसकी कॉपी फाइल कर देते हैं लॉर्डशिप. बहुत से लोगों से पैसे लिए हैं. अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 4 लोग. नेक्स्ट वीक कर दीजिए, हम अनुबंध की कॉपी फाइल किए देते हैं लॉर्डशिप.
लॉर्डशिप नेक्स्ट वीक कर दीजिए, हम फाइल कर देते हैं लॉर्डशिप, पब्लिकेशन भी कॉपी फाइल कर देते हैं लॉर्डशिप। पेपर पब्लिकेशन है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है ना, हम एम्प्लॉय हैं उनके लॉर्डशिप, तो मैं फर्स्ट एंटिसिपेटिव एप्लीकेशन लॉर्डशिप नहीं पता, नेक्स्ट वीक कर दीजिए, हम वो फाइल कर देते हैं लॉर्डशिप। has been filed on behalf of applicant. लॉर्डशिप विड्रॉ किए लेते हैं लॉर्डशिप, ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए। Learned counsel for the applicant. First respective application filed on behalf of applicant. क्लियर कट फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, कुछ भी लॉर्डशिप फ्रॉड तो किसी और ने किया है लॉर्डशिप, हम तो रेडी भी हैं वो अनुबंध पेश करने के लिए लॉर्डशिप। नेक्स्ट सीडी नॉट अवेलेबल। Shri Ghanshyam Pandit, learned counsel for the applicant. Shri Badi, other learned government advocate for responding state. As per learned counsel for the state, CD is not available. Let it be produced on next date positively list after. next week कर दें माइलर, After 1 week. next week हम next week ही अगला आएगा 1 week के बाद। Yes. My lord, this is application of granting anticipatory bail, lordship. But so far as the case of prosecution, the Tehsildar revenue seized the tractor and trolley, alleging that the driver Ram Lakhan was carrying out the some sand. My lord, the present applicant is Guddi Ram alias Tarun Sharma, my lord. Neither he is the owner nor the driver of the vehicle. In fact, लेबर के रूप में सब काम करते थे, एंगेज किया गया था टाउन में, रेत बकरा सप्लाई करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से। He has been क्या इनका क्या रोल है? माय लॉर्ड, मैं ये राम लखन कुशवाहा का मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ। इसमें अब हमने है कि पेज नंबर 13 पे, ग्राम धमौरा, थाना रोड छतरपुर का रहने वाला हूँ, ड्राइवरी का काम करता हूँ। दिनांक 10/4/2021 को गुड़ी राम उर्फ छोटू शर्मा का जॉन डियर ट्रैक्टर 5310 चला रहा था। दिनांक 10/4/2021 को गुड़ी राम उर्फ छोटू शर्मा निवासी चौबे कॉलोनी का जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्राली को में ग्राम टीला की रेत खदान से चोरी से रेत भरवाकर बिक्री हेतु छतरपुर भेजा था। रेत विक्रय हेतु मैं सटई रोड होमगार्ड पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, जहां पर तहसीलदार साहब पटवारियों के ट्रैक्टर पकड़ लिया। मुझसे रेत का पिटपास कागजात मंगाया, मेरे पास कोई पिटपास कागजात नहीं था, मैंने पिटपास कागजात पेश नहीं किया तथा तहसीलदार साहब ने ट्रैक्टर ट्राली रेत जब्त कर लिया था और ट्रैक्टर ट्राली थाना सिविल लाइन में रखवा दिया था। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है, मेरी ड्राइवरी लाइसेंस तो इसने बताया कि इसने भेजा था। That's all right. Whether he is the actual owner of the no, I am not the नहीं है। पेज नंबर 13 पे लगाया हुआ पे, evidence क्या है? पेज नंबर 13 पे हमने लगाया है सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इट इज बिलोंग टू बन राघव सन ऑफ राम से, राघव शर्मा के नाम का रजिस्ट्रेशन। Yes, granted. माय लॉर्ड ओब्लाइक। This case is also same serial number 5. The date of incident, the police registers the offence only Mines and Minerals Act. Then the tractor had been released by the London JMFC Lordship Court. Then after some time, police had the section 379 404(1) of the Lordship. Kindly see the annexure A2. Similar allegation, the co-accused has been released on bail, page number 9. The applicant is the driver of the vehicle. But you trolley was arrested. Trolley was seized from a position. Trolley was seized by the police, and that after some time, the tractor and trolley are released by the London JMFC. That's all right. But Or then let's kindly see this. Then after some time, the police registered the offence 379 414 of the IPC and the given the notice of the 41 of the yes. Then applicant is released on bail by the court. The same situation. चालान के समय पहुंचने के लिए कोर्ट कहा। Same situation. ऐसे नहीं हो रहे वहाँ। सत्येंद्र कुमार अंतिल केस में कहा चार्जशीट पेश हो गई है, उसके बाद आपको ट्रायल कोर्ट को एक सर आप इनको गिरफ्तार किए नहीं है। 41A का नोटिस देके जब छोड़ा है कि चालान पेश होने पेज नंबर 9 देखे सर। हाँ देख लिया मैंने, उसमें सेम सिचुएशन दोनों की थी। ठीक है दी होगी आपको, लेकिन लॉ ये है आपको ट्रायल के उसमें
सर इन्वेस्टिगेशन सर ना नीचे नीचे जहां हम उपस्थित होते हैं लोअर जुडिशली में, वहां पर ना तो सत्येंद्र अंटे वाला केस को फॉलो किया जा रहा है ना अमरीश वाले साहब को। तो जैसे हम वहां अपियर होंगे लोअर जुडिशली में, हमको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे साहब। 4/6/2022 को चालान पेश हो गया है माय लॉर्ड, 4/6/2022 को चालान पेश हो गया है। तब से ये आप फरार घूम रहे हैं, आपसे ही तो ट्राली ट्रैक्टर सब जब्त हुआ है। सर ट्रैक्टर ट्राली जब्त हुआ, पुलिस ने हमको अरेस्ट करके छोड़ दिया। नॉट इन क्राइम। ठीक सर, मैं अरेस्ट करता श्री Chaurasia, learned counsel for the applicant. Shri, my dear, the learned government advocate for respondent state. This first anticipatory bail application under section 438 of CRPC has been filed on behalf of applicant Ravi Yadav for grant of anticipatory bail in connection with crime number 116/22 of PS Orchha Road, Chhatarpur, for commission of offence under section 379(414) of IPC 4,21 Mine and Mineral Development Regulation Act 1957 and section 18(1) and 18(2) of the Illegal Mining, Transporting and Storage Rule 2006 and Madhyapradesh Transporting the Storage and Business Rule 2019 and Sub Rule 2002. Next. As per the prosecution story, on 20th/11/2021 at around 12:15 p.m. Tractor bearing registration number MP498749 was seized. Attached with the tractor trolley was seized from one Ravi Yadav, resident of village Dhamora, as he was transporting sand in that vehicle without any permit or pass. Case was registered and tractor and trolley was not parked in the police station Orchha Road. FIR was registered. After investigation, charge sheet has been filed. Next. Learned counsel for the applicant has submitted that after seizure of the tractor and trolley from his possession, notice under section 41 of the CRPC was given to him and he was not arrested by the investigation officer. After investigation, charge sheet has been filed. Therefore, he will be released on anticipated bail. Next. On the other hand, learned counsel for the state has opposed grant of anticipated bail and have submitted that charge sheet had already been filed long back in the month of 4/6/2022 on 4/6/2022. Despite due information of the filing of the charge sheet, applicant did not appear before the trial court and is still responding. Therefore, he will not release on anticipated bail. In this case, after investigation, charge sheet has been filed and applicant has not appeared before the trial court despite due service, despite information of the filing of charge sheet. Therefore, having taken into consideration all the facts and circumstances of the case, this court is not inclined to release applicant on anticipated bail. Therefore, this first anticipated bail application filed on behalf of applicant Ravi Yadav is dismissed. Obligation.
Madhyapradesh under section 438. Option under section 452, 323, 325, 427, 506, 34 of the advice. Only 452 is the non-billable आवेदन सर आर्थिक अज्ञात खिलाफ रिपोर्ट हुई है सर, उसमें ढाबे में झगड़ा हुआ 26/10 को सर झगड़ा हुआ 9:30 उसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, 3 लोग, उनकी बेल वहां से हो भी गई अनिश कुमार उस संदर्भ में। उसके बाद सर इसके जब हमको जानकारी, हमको ही मुलजिम बना रहा है, इसी साहब ने बेल लगाई थी, बेल उन्होंने खारिज कर दी थी आपके सामने। अनिश कुमार इज देयर सर थोड़ा डायरेक्शन दे दे सर। Learned counsel for the applicant. Seconded by the other learned government advocate for the respondent district. Seconded by learned counsel for the applicant. This first anticipative bail application filed on behalf of the applicant. Naresh Singh Lodhi is disposed of and withdrawn. Next, however, in this case, it cannot be overlooked that in an offence under section 452 of 450 sir IPC, maximum non-billable punishment of 7 years. sir. Therefore, police authorities are directed to strictly comply with the directions of the Honorable Apex Court in the case of Adesh Mishra versus State of Bihar, case law and Satyendra Kumar Nitil versus CBI regarding arrest of the accused persons in such cases. Application is disposed of. Please, my lords. The first bail application under section 438. But offences are under section 323, 325, 294. All offences are all are available in nature, my lords. There was a presumption that 326 has been enhanced. Therefore, they have filed an application under 438 that has been rejected on merits. Charge sheet had filed against you. No, my lords, charge sheet is awaited. I'm only praying for appropriate direction. Charge sheet filed, yes. You filed this. Your first information report. I'm only praying. No, 326 is against the complainant. There was a cross FIR as well. It is cross FIR. Yes, my lord. Yes, क्या है? 325 लॉर्डशिप मुंह में लाठी मारा, 2 दांत टूट गए इनके। 325 है ना? Available. But actually, they were under the presumption that is why अभी उसमें एमएलसी के बाद और रिपोर्ट बढ़ेगी तो चालान तक फिट करो। तब दोबारा लगा देना उसमें क्या? Any appropriate direction because it has been dismissed on merits, my lords. That is what my prayer is. Application under 438. केवल 325 है ना? Yes. अभी तो 325 है। And the application is rejected on merits. देखा ना जरा? हेड इंजरी है और मुंह पे लाठी मारी है। सिंह घोष काउंटर ब्लास्ट नहीं है लॉर्डशिप, ये पहले का केस है पुराना वाला जो इनका उसके अगेंस्ट में है, काउंटर ब्लास्ट नहीं है। बट ऑफेंसेस आर अवेलेबल। यस दे आर अवेलेबल। लिखिए this first and expletive bail application under section 438 of CRPC has been filed on behalf of applicant Ashish Ghosh and Maharaj Singh Ghosh. Next, learned counsel for the state has submitted that all offences are bailable as offences have been registered for commission of offence under section 323, 325, 294, 506 of IPC as offences are bailable. Anticipative bail application is not pending. Learned counsel for the parties
are not available. But therefore, this anticipative bail application being not maintainable, it's dismissed. Any direction? डायरेक्शन कर दिया, अवेलेबल है और क्या? Obliged. इसके बाद फर्दर डायरेक्शन क्या चाहिए भाई? Obliged, ma'am. Case diary not available. My lord, I am seeking permission to file wakalatnama behalf of objector, my lord. Let me just make one submission, my lord. Trial court's order, Lordship may see 41A notice was given at the time of filing of the charge sheet, my lord. My anticipatory has been dismissed. Satyen Kumar Antil I've got. Your Lordship may just have the trial court's order. I don't think, my lord, anything further would be required. There are already directions issued by this honorable court. If your Lordship may have page 10, my lord. My lord, gunshot is also there, my lord, in the Lord, incident. may just see page 10 for a moment, my lord. That's not the issue here. नहीं, that's all right. इनको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं ना सुनने की. So 40 नहीं ये admitted fact है 41A का notice है, trial court खुद कह रही है 41A का notice. That's all right. That's all right. But even then, opportunity of hearing to the opposite side has to be granted. देखिए, श्री संकल्प कोचर, learned counsel for the applicants, श्री Neeraj Pathak. Neeraj Pathak, learned counsel for the respondent, objector. Respondent नहीं है, objectory for the objector, श्री A.N. Gupta, learned government advocate for the respondent. Shri Neeraj Pathak advocate has appeared on behalf of objector complainant and fixed time to file wakalatnama. My lord, today I received the wakalatnama. Due course of the day, I have filed the wakalatnama. देखिए, he is directed to file the wakalatnama before list next week. Obliged. After 1 week कर देना. Next week कर दे sir. अब जनवरी में आएगा. Sir, next week में आ जाएगा, vacation bench भी होंगी. Just a direction which is required. Today, more than 300 cases are listed. How it is possible in the vacation bench to lift such type of matters, particularly anticipative bail? I'll do obliged. After 1 week, in the first week, January कर देता हूँ. Yes. His diary is not available. Kindly taken up after vacation. She did not available. Your good name? Sunanda Keshawani. Sunanda Keshawani. Sunanda? Keshawani. Miss Sunanda Keshawani, learned counsel for applicant, Shri N. Gupta. How do you know that case diary is not available? Huh? Shri N. Gupta, learned government advocate for respondent state. As per learned government advocate, she is not available. Let it be produced on next date postal list after 2 weeks. Next week I pray for item 11 because senior counsel Mr. Manish Dutt is out of town, my lord. Shri Manish, Along with connected 11.1 lordship. Yes, my lord, both. Counsel for the applicant. I am for objector. Shri Nitin Jain, learned counsel for objector. Shri N. Gupta, learned government advocate for respondent state. As prayed by learned counsel for the applicant. List after 2 weeks. 1 week करने, my lord. After 1 week. Obliged, my lord. My lord, this case also argued by Mr. Dutt, senior. Sir, objector case बटन. अब इसमें सर इसको थर्सडे के लिए रख लेना. नहीं हो पाएगा भाई, इतना कैसे पॉसिबल हो सब रहा सर है? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मानना नहीं मानना आपका. क्या होता है? Every day more than 300 cases are being listed. It is not possible to pick up cases. After 1 week. मैं Mr. राजकमल चतुर्वेदी and objector P.S. Patel. Yes. ठीक है. Next week कर लो. Next week कर लो. श्री S.N. Pandey. जी. Behalf of the Prabhat. Both lordship. Along with 13.1. S.N. Pandey, learned counsel for the applicant. Learned counsel on behalf of the arguing counsel. Shri N. Gupta, learned government advocate for the respondent state. Who is in connected matter? एक ही आप ही हैं? I am behalf of the Shankar Singh. दोनों एक ही लॉर्डशिप. दोनों प्रभात कुमार सिंह के. As prayed by learned counsel for applicant. List after 2 weeks.
माय लॉर्ड रॉन्गली लिस्ट हो गई है लास्ट ऑर्डर में माय लॉर्ड। काय को रॉन्गली कोर्ट नहीं भाई, गलत स्टेटमेंट। धगट साहब के यहाँ गया नहीं, ये रॉन्गली लिस्टेड नहीं होता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि गलत स्टेटमेंट में दो कोर्ट नहीं होने के कारण केस यहाँ लगे। हाँ, वो तो मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ श्याम रानी, आ गई? जी मैडम। क्या है माय लॉर्ड? इसको पास ओवर रख दी माय लॉर्ड, सीनियर काउंसिल करेंगे। दो लोग हैं? नहीं मान, दोनों में आप ही हैं? नहीं, एक मुझे मैं 14.1 में मैं हूँ लॉर्डशिप। ठीक है, मुझे आ जाने लॉर्डशिप। अप्रोप्रिएट बेंच का कर दिया। नहीं, इसमें अप्रोप्रिएट बेंच का कोई ऑर्डर नहीं। वेदर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन हैज बीन डिसाइडेड बाय दैट बेंच? नो। देन हाउ अप्रोप्रिएट बेंच? माय लॉर्ड नेक्स्ट वीक कर दे माय लॉर्ड, नेक्स्ट वीक। हाँ, ये टाइम मांगो दे देंगे। नेक्स्ट वीक कर दे माय लॉर्ड। देखिए श्री सुनील सिंह, सुनील सिंह, Sunil, learned counsel for the applicant, Shri B.J. Chaurashia, learned counsel for the objector, Shri Purushottam Soni. ऐसे बनेगा ना ये। Learned penalized for respondent state, prayed by learned counsel for appointing list after 2 weeks. 1 week में 1 week वेकेशन मिल रहा है। सर मेरी दोनों में ऑब्जेक्टर की तरफ से हाजिरी डाल। दोनों में एक में आपका क्या नाम है? संदीप मिश्रा। ये लॉर्ड संदीप मिश्रा। 301 का ऑब्जेक्शन फाइल करो। Next week, my lord, 15.1. This is criminal appeal Thank you. under section 14. Lord, you are for objector. No, my lord, 15.1 MCRC my lord, उसमें हमारे ऊपर STSC नहीं लगा था इसलिए MCRC बनी हो। अच्छा, इसके साथ कनेक्टेड जी। एंड आप? आई एम पर 15 आइटम नंबर 15, इसमें कंडोनेशन आप डिले के लिए तो उसमें नोटिस होगा। ये बेल में कैसे कंडोनेशन ऑफ डिले की? ये एट्रोसिटीज की वहाँ पुरानी बेल खारिज हुई थी लॉर्डशिप 2021 में। जो इम्प्यूग ऑर्डर रहा 24/8/2021। नहीं, आपने लिखा दैट अपीलेंट हैज फाइल्ड क्रिमिनल अपील अगेंस्ट द इम्प्यूग जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेटेड 24/8/2021। ये तो बेल एप्लीकेशन है, आप कैसे कट पेस्ट कर दिया आपने लगता है। पढ़िए अपनी एप्लीकेशन। कंडोनेशन ऑफ डिले। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। ये 24108 इज योर एप्लीकेशन। पढ़िए पढ़िए। सॉरी सर, एप्लीकेशन नहीं, सॉरी लॉर्ड है ना। बताओ, जमानत में आप ये जजमेंट कन्विक्शन और सेंटेंस के खिलाफ अपील लगा रहे हो, क्या करें? हम फ्रेश एप्लीकेशन लगा थे। अच्छा, तो ये डिसमिस कर दूं, विड्रॉल? ये विड्रॉ कर दें आपकी? आइए विड्रॉ कर, आइए विड्रॉ करके फ्रेश लगा देता हूँ। कंडोनेशन श्री एलन साकले, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री पुरुषोत्तम सोनी, लर्नेड पेनलाइट फॉर रिस्पोंडेंट स्टेट, prayed by learned counsel for appellant IA number 24108/22 is dismissed as withdrawn and not as prayed list after 2 weeks. Zoning next. It's an appeal for grant of bail, your lordship. Lordship, victim notice not served, lordship. लिखिए। श्री मनीष तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant, श्री पुरुषोत्तम सोनी, लर्नेड पेनलाइट फॉर रिस्पोंडेंट स्टेट, as per learned counsel for the state, notice has not been served on the basic respondent number 2 so far. Learned counsel for state is directed to comply with the provisions of section 15A3 of the FCST PO Act and to serve notice upon respondent number 2 on the next date positively. List after 1 week.
इसमें प्रोसिक्यूटिव सर होस्टाइल हो गई है, कॉपी भी हमने फाइल भी कर दी है, अभी परमिशन ली थी सर आज से सुबह। तो पहले इसको वहां पेश करिए। कर दी सर। तो वो आज तो नहीं हो पाएगी सर। पासवर्ड में लेने आ जाएगा सर, लंच करते जाएगा, पासवर्ड में लेने सर। नहीं, अब अगले उसमें जा। सर ये सेकंड बिल है, फिर आपके नहीं लग रहा, लगेगा नहीं वेकेशन, इसलिए कह रहा हूँ ना। तो जो भी है, एक हफ्ते और रही है क्या? आपने लिबर्टी दी थी सर वेकेशन, आप देख लेना। तो ठीक है, आप तो आने तो दीजिए। पासवर्ड में ले दी सर, कोई दिक्कत, पासवर्ड नहीं आता तो फिर बढ़ा दीजिएगा। श्री मनोज कुशवाहा, learned counsel for the appellant. Shri Purushottam Soni, learned panel for respondent number 1 states. You are for learned counsel for the complainant. Yes. Respondent. Yes. Learned counsel for the respondent number 2 6 time to file some document before the registry as per it. List after 1 week. सर फाइल कर दी है मैंने, फाइल कर दी, फाइल हो गई। अब वो कर दीजिए तो आ जाएगी। Yes. फाइल थोड़ा मिसप्लेस हो गई इसलिए। So do you seek time? Yes, my lord. Your good name? R.D. Singh Pariyar. Shri R.D. Singh, learned counsel for the applicant. Shri Purushottam Soni, learned panel for the respondent state. As per learned counsel for the applicant, his file is misplaced. Therefore, is 6 time. As per list after 2 weeks. 1 week. After 1 week. Sure. Lord senior counsel is out of station. I am praying for after a week's time. Shri Kuljit Kushwaha. Kuljit, learned counsel for the applicant. Shri Purushottam Soni, learned panel for the respondent state. As per learned counsel, senior counsel who has to argue the bail application is out of station. Therefore, as per it, list after 2 weeks. Grateful, my lord. माय लॉर्ड चार्जशीट नहीं आ पाई, चार्जशीट पेश हो गई है, कॉपी नहीं मिल पाई, तो नेक्स्ट वीक। So how much time? नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड। देखिए श्री डीएस लोधी, डीएस लोधी, learned counsel for the applicant Shri Satpal Chawla, learned government advocate for the respondent state as read by learned counsel. List after 1 week. In this matter, my lord, challan has been filed, but my lord, I have not in position, my lord. Therefore, it may be taken, my lord, after tomorrow and my lord, next week. Shri Sanjeev Kumar Singh, learned counsel for the applicant Shri Satpal Chawla, learned government advocate for the respondent state as read by learned counsel for applicant. List after 1 week. सर इसमें एक हफ्ते का समय दिया डायरी। देखिए none for applicant Shri Satpal Chawla, learned government advocate for respondent state as per learned counsel. For the state series not available. Nice. Let it be produced on next date first evening. List after 2 weeks. Lords, I praying for next week, Lords. I praying for next week, Lords. Yeah, next week. After 1 week, sorry. Lords. 24 TDS Yes. ठीक है, आप बताइए आपका क्या क्या। सर इनका भी पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है 4-34 आबकारी का, 2 और अपराध पहले के हैं, ये तीसरा 34 1 2 का पहला है। हाँ 2 का ये पहला है। जी पहला। लिखिए नन फॉर द एप्लीकेंट 62 लीटर 63 लीटर। गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट और none has appeared for the applicant list after 1 week. Yes. 25 This is the first application, 439. The offense is 420, 467, 468, 471 of IPC matter. The applicant is in jail for about 4 months
The allegation against the applicant is that he has made forged withdrawal into accounts and paid some of the amount has been returned to the account holders, my lord. From the impugned orders, it is proved, my lord. Page number 9 में can be seen. So you have deposited, you have paid. जो 25,000 का ऐसा एलिगेशन विड्रॉल है जबकि अकाउंट होल्डर बोलते हैं हमने खुद विड्रॉ किया है. दे हैव फाइल्ड एफिडेविट बिफोर द कोर्ट बिलो. आई हैव फाइल्ड द एफिडेविट फाइल्ड बाय द अकाउंट होल्डर्स. They are saying that I have made withdrawal and with a view to remove the applicant from the post of operator of kiosk. The false report has been lodged against him. They themselves appear before the court below. They filed affidavit that I have made withdrawal. Their thumb impressions, my lord. 25,000 रुपए विड्रॉल है. इनका कहना है पैसा हमको मिल भी गया है, हमने विड्रॉ किया है. लिखिए श्री. Yes, Commissioner. वन अकाउंट होल्डर लॉर्डशिप स्टेटमेंट वन अकाउंट होल्डर अदर अकाउंट दो टू का इन्होंने फाइल किया है. दो का अदर भी है लॉर्डशिप. उनके स्टेटमेंट दर्शनलाल भलावी एंड लक्ष्मी आम्रवंशी. ये दर्शनलाल भलावी का स्टेटमेंट आई वांट टू रीड लॉर्डशिप. Statement under 161. Yes, lordship. Yes, but now they have filed affidavit that they have already received the money. दो का एफिडेविट फाइल किया है लॉर्डशिप ने. हाँ, उन्हीं एक तो ज्वाइंट एफिडेविट है. भलावी का दोनों का अलग अलग है. अच्छा, ये लक्ष्मी का है. हाँ, दोनों का अलग अलग, दोनों ने सेम स्टेटमेंट दिया है. धन्यवाद. ठीक है, 25,000 का. 4 महीने सब जेल में. कोई ज्यादा नहीं है. लिखिए श्री. Yes, Commissioner. Yes, Commissioner. Learned counsel for the applicant, Miss यादव. Nita Yadav, learned counsel, learned panelist. Yes, sir. For the respondent. This first bail application under section 439 of CRPC has been filed on behalf of the applicant Anand Kanodia for grant of bail pending the trial. Next. Applicant has been arrested in connection with crime number 300/22 of PS Parashia, District Chhindwara for commission of offence under section 420, 467, 468 and 471 of IPC. He is in jail since 112. कब से जेल में? He is in jail since 27/8/2022. Next, as per the prosecution story, on 26/8/2022 ये घटनाक्रम 13 से 2022 के बीच का दिखाया गया. हाँ, सब सिम्बोना का पुरानी विड्रॉल. अच्छा. Prosecution story on 26/8/2022 संतोष चौरे, District Coordinator, Messer Safe Solutions Private Limited, filed an application and writing before Police Parashia alleging that he operates the kiosk center of the nationalized banks, full stop, in State Bank of India, Chhindwara. Kiosk center are also being operated by the company. He is the district coordinator of company and is posted since January 2021. Full stop. The online form is being filled by the kiosk operator, and at least 2-3 thumb or finger impression is being taken for the operation of the account, and an identity card is also issued to the customer of the customer service center. Stop.
Anand Kanodia was selected to operate the kiosk center at village Pagara, and he is working as kiosk operator since 2013. List of Anand Kanodia opened saving account for the several persons belonging to the villages. List of on behalf of the company, Anand Kanodia was directed to provide the services to the customers. The fingerprints of the customers were linked with the online accounts. On 23/8/2022, he was informed by Nityend Kumar of State Bank of India, Regional Office Chhindwara, that 25,000 rupees have been withdrawn from the Quest Center Pagara. Stop. नहीं क्या लिखा पढ़ना 8/22 informed. हाँ इसके बाद it was informed करते हैं. It was informed that the account of Darfanlal Bhalavi, whose account is in kiosk center Pagara, 25,000 rupees have been withdrawn from the kiosk center Umranala and Hirdagarh. When he contacted the Sunil Paradkar of the Umranala Quest Center, it was informed that one person had come with identity card of Darshanlal and he had withdrawn 20,000 by putting his fingerprints. Sam was informed by the Chunnilal Yadvanshi, Quest Center operator of the Hirdagarh. In inquiry, it was found that activities of the Anand Kanodia are suspected. Stop at this. He, along with Nityend Kumar, reached to the house of Anand Kanodia and inquired from him. At this, he confessed that at the time of filling the form for Darshanlal Bhalavi, he had given his own fingerprint, and on the basis of those fingerprints, he had withdrawn 20,000, 5,000 from the account of Darshanlal Bhalavi. He had also handed over the identity card of the Darshanlal Bhalavi in his possession. FIR was registered. After investigation, charge sheet has been filed. Next. Learned counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed any offence. He has been falsely implicated.
The withdrawn money was handed over to the account holders. He had submitted that account holders, Darfanlal Bhalavi and Lakshmi R. Barsi, have filed their affidavit to the effect that they have received the amount from that they had received the amount from Anand Kanoji. Therefore, it has been said that applicant accused is released on bail. Next. On the other hand, Learned Penlife for the state has opposed grant of bail. Applicant is in jail. Next कर देना. Applicant is in jail for the last almost 4 months. After investigation, charge sheet has been filed. Therefore, have been taken into consideration the affidavit filed by the persons who are alleged to have been cheated by the applicant without expressing any opinion on the merit of the case, but having taken into consideration all the facts and circumstances of the case. I am of the view that it is a case in which further pretrial detention of the applicant is not allowed. 50,000. Yes. Item number, I'm requesting for item number 24, my lord. Yes. Just pass out, my lord. अब तो हो गया वो. ये पास ओवर में रखने वाला बस. अब तो बढ़ गया, 1 हफ्ते के लिए बढ़ा है. तो सिर्फ आबकारी का है, my lord. 34 to. अब हो जाने दो, 1 महीना तो हो जाने दो, अभी महीना भर भी नहीं हुआ आपका. My presence will be mentioned, my lord. My presence will be mentioned, sir. On 24 है. 24. Listen. Okay. So I bring 1 week's time, let's in this case. Shri R.S. Seni. R.S. Seni, learned counsel for the applicant. Shri N. Gupta, learned government advocate for the respondent state. As prayed by learned counsel for applicant list after 1 week. Diary is not available. Shri Vidya Prasad. Vidya Prasad Kushwaha, learned counsel for the applicant, Miss Yadav. Yes, Geeta Yadav, Srimati Geeta Yadav. Miss Geeta Yadav, learned counsel for the learned penlife for respondent state. As prayed by learned counsel for the applicant list after 2 weeks. 1 week only. 1 week. In this matter also, diary is not available. देखिए, Shri S.N. Pandey, learned government advocate for respondent state. Miss Geeta Yadav, learned penlife for respondent state. As per learned penlife, CD is not available. Let it be produced on next date first. 2 minute मारो. Well, praying for after vacation. Shri Prakhar Tiwari. Prakhar Tiwari, learned counsel for the applicant, Miss Geeta Yadav, learned penalized for responding to state.
as prayed by learned counsel for the applicant list after 2 weeks. Complies. That's my first bail application, my lord. Offense under section 376, 376(2) and D, my lord, and 323, 506, my lord. As per prosecution case, my lord, page number 9. May I read, sir? Yes. पेज नंबर 9 में सच प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि ब्लॉक संरक्षित केंद्र मझौली जिला जबलपुर द्वारा पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोजन के अनुसार आवेदक पर फरियादी के साथ दिनांक 10/3/2020 को, मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट मिलॉर्ड बिकॉज आई एम पॉइंटिंग आउट द डिले इन दिस केस मिलॉर्ड, 10/3/2020 को बलात्कार कर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी देकर फरियादी के साथ बार बार बलात्कार करने और मना करने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्कों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है मिलॉर्ड। एंड मिलॉर्ड the charge sheet has been filed, my lord, and one written complaint made by the prosecuting before the police station, my lord, that complaint is a part of the charge sheet, my lord. I read that complaint, my lord, because in that complaint, my lord, he implicated the present applicant, my lord. Thereafter, when 161 statement is recorded, they implicate the present applicant, but when on the same date, my lord, when 164 is recorded, my lord, he implicate other person who accused, my lord. Two persons in 164, my lord. There is a much contradiction in their complaint, my lord, and 161 statement, my lord, and 164 statement, my lord. And there is a delay also, my lord. 164, I read that complaint, my lord. Yes. मैं श्रीमती राधा वर्मन पति विक्रम वर्मन स्वयंसो दीपक यादव का घर है, उसके घर पर सोनू यादव उसकी मौसी का लड़का है जो कि पिछले 2 वर्ष से है वह दीपक यादव के घर पर रह रहा है। शी इज ए मैरिड वुमन। यस माय लॉर्ड, 29 एज, अबाउट 29 ईयर, एंड द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज 21 ईयर माय लॉर्ड। 164 में कुछ और बोला है माय लॉर्ड, दो लोगों को 164 मैरिड। यस। मेरा नाम राधा वर्मन है, मैं मझौली पिपरिया कॉलोनी नंबर 6 में रहती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी के 10 साल हो गए। मेरे पति प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। हम सिहोरा में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। इससे पहले जबलपुर में रहते थे। सोनू यादव एवं दीपक यादव मेरे घर के बाजू में रहते हैं। आशा दीपक यादव की बहन है तथा मेरी दोस्त है, इसलिए वह मेरे घर और मैं उसके घर आती जाती रहती थी। 11 मार्च 2020 को होली के दूसरे दिन मैं आशा यादव के पास मिठाई लेकर होली की बधाई देने उसके घर गई तो वहां पर उसका भाई दीपक यादव और सोनू यादव जो उसकी मौसी का लड़का है और 2 वर्ष से उसी घर में रह रहा था। दीपक यादव और सोनू यादव ने मुझसे कहा कि आशा अंदर है, तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाकर आशा को आवाज लगाई तो वहां कोई नहीं था। दीपक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और दीपक तथा सोनू यादव मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मैं रोई चिल्लाई तो वे नहीं माने और दोनों मेरे साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाए और मेरा वीडियो भी बनाया और मुझे धमकी दी कि यदि मैं किसी को इसके बारे में बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। मैंने अपने पति को डर की वजह से कुछ नहीं बताया। इसके बाद सोनू यादव और दीपक यादव कई बार मेरे साथ आए दिन कई बार मुझसे अपने घर बुलाए और जब मेरे पति घर पर नहीं रहते तो दोनों बारी बारी से संबंध बनाते थे। दिनांक 1 जुलाई 2022 को जब मेरे पति चुनाव ड्यूटी पर गए थे तो दोनों को बच्चों को भी ले गए थे। तब रात लगभग 11 बजे सोनू यादव आया और मेरे साथ मारपीट कर शारीरिक संबंध बनाया था। मेरे पति दूसरे दिन जब घर आए तो मैंने उनको घटना की पूरी बात बताई। तो फिर मैं, बच्चे और पति मझौली का घर खाली करके सुहागी के किराए से रहने लगे। फिर जब हम लोग सुहागी रहने लगे तो और सुहागी से ड्यूटी स्टेशन के पास स्कूल पढ़ाने जाते थे तो रास्ते में दीपक यादव और सोनू यादव उन्हें रास्ते में रोककर पुलिस में शिकायत न करने के लिए धमकी देते थे और कहते थे कि पुलिस के पास गए तो जान से खत्म कर देंगे। सोनू और दीपक यादव मुझे ब्लैकमेल करते रहते थे, मुझसे पैसे की मांग करते थे। मैं उन्हें 2 साल से लगभग 1,30,000 रुपीज दिए हैं। जब दीपक और सोनू ज्यादा परेशान करने लगे तब हम लोगों ने थाने में दिनांक 23/8/22 को शिकायत की। Any evidence has been collected? Whether any video has been seized? Video has not been seized, Lordship. Whether any evidence has been collected on the point she handed over or she
transferred any money in the account of these two applicants? Account. Or there is nothing. Account money तो लॉर्डशिप कॉल कर लेते हैं। आप बुलाइए उसको। क्या है? चार्जशीट फाइल हो चुकी है सर, और इसमें सब पार्ट ऑफ चार्जशीट अगर वो होता तो सब कुछ होता सर इसमें चार्जशीट में। So there is no criminal record of the present type. Do you have the copy of the charge sheet? सर हमारे पास है ना सर, इसमें कुछ भी नहीं है जो मतलब इसमें ना ही वीडियो है, ना ही कोई मोबाइल है, ना ही आईटी एक्ट का कोई धारा लगाई है जिससे कि ये प्रूफ हो कि हमने कोई की वीडियो रिकॉर्डिंग की है या बनाई है। Except the statement of the prosecuting, any other evidence? लॉर्डशिप I want to take the time, lordship. ठीक, बुलाइए श्री Call. रमन चौबे, learned counsel for the applicant. श्रीमती गीता यादव, learned panelist for the respondent state. Learned counsel for the state 6 times to furnish information about seizure of the video, if any, prepared by the applicant. Also the information about transaction of money from bank account of the prosecutors in the favor of the list after 1 month. After 1 week. My lord, this is first bail application, my lord, under section 439, my lord. Offense is under section 304B and 34 of the IPC, my lord. The present applicant is a Phupa Sasur, my lord, that is uncle, father-in-law, my lord. The prosecution case is like this, my lord. Kindly come down to the page number 7 and of the last paragraph of the order. What are the allegations against you? My lord, so far as the allegation, the cause of death is this is hanging. Yes. Deceased reside in village, my lord, that is Goraha. I reside in village, my lord, Gaisabad. I am residing separately, my lord. I am the Phupa Sasur. From the deceased and her husband. Main allegation, my lord, even assuming the prosecution case, the main allegation is against, my lord, the husband. Yes. With regard to demand of motorcycle, but the demand of motorcycle was fulfilled. Thereafter, my lord, it came in the statement of the family. Why in every case of the dowry death, motorcycle is demanded? My lord, that was fulfilled, and a husband and a wife was being beaten by the husband, and she committed suicide. So what are the allegations against you? My lord, What the basis allegation you have against been that, my lord, the reason for implication of us, my lord, is that because got, my lord, make the marriage of their daughter, my lord, in the family of the present. Achha, you are the person Yes. who were mediated in the That's marriage why, that's why, my lord, I have been implicated in the case. And I am deciding, my lord, I have filed the Samagra ID. Kindly come. My lord, first my submission is, my lord, the date of marriage is 3/5/2022. And after 22. 3/5/2020. Yes, my lord. Achha. After passing of 6 months, my lord, 24/11/2022, the deceased Pooja Patel Committed suicide. committed suicide and by the hanging, my lord. Yes. During the investigation, my lord, the statement of the mother and father is found. May I read to first statement of the mother of the deceased, Goody Bhai, my lord. Yes. हिनौता में रहती हूँ, किसानी करती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दस्तखत कर लेती हूँ। 6 लड़की 1 लड़का है। सबसे बड़ी लड़की पूजा पटेल थी, जिसकी शादी 3/5/22 को हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्राम गर्रा में स्वर्गीय राजू के लड़के गजेंद्र के साथ की थी। शादी में मैंने 100 दिया था। उसके बाद ये आया सर, यहाँ बात बच्ची पूजा को समझाई कि दामाद को समझाना कि अभी पिता की हैसियत मोटरसाइकिल देने की नहीं है, जब पैसे हो जाएंगे तो मोटरसाइकिल भी दे देंगे। इसके बाद दामाद गजेंद्र ने मेरी बच्ची को दहेज मोटरसाइकिल न देने के कारण मारपीट करने लगा। उलाहना के बाद कई बार गजेंद्र पटेल के नाना हुकुम पटेल, फूफा ससुर गोपाल और करण पटेल को दिया। तो करण पटेल का नाम यहाँ आया है सर कि उसको उलाहना दिया कि ये मोटरसाइकिल की। उसने कुछ बोला नहीं? हाँ, ऐसा जनरल एलिगेशन है कि इसको उलाहना दिया। देयर आफ्टर माय लॉर्ड कई लोग ये कहते हैं बच्ची ब्याही है, मोटरसाइकिल देना पड़ेगी। चलो लाइन श्री सौरभ सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, प्रियच्छा नामदेव, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट. This first bail application under section 439 of CRPC has been filed on behalf of applicant Karan Patel for grant of bail. Next, applicant has been arrested in connection with crime number
201/22 of PS Gasawan, District Damoh, for commission of offence under section 304B, /34 of IPC. In detention since 13/11/2020. As per the prosecution story, next, as per the prosecution story, on 24/11/2022 at around 7:08 a.m., Pooja Patel, who was married with, whose marriage was performed with one Gajendra Patel on 3/5/2022. 3/5/2022, committed suicide by hanging herself in her matrimonial home. Maternal house. Matrimonial home. Yes, ma'am. Matrimonial house in village Guraha. Matrimonial home. Stop. In the course of inquiry and investigation, it was revealed that she was being subjected to cruelty and harassment by her husband Gajendra Patel in connection with demand of motorcycle, stop, when thereafter, when he could not, when the parents of the deceased could not fulfill the demand of giving motorcycle, Gajendra started to beat deceased. Full stop. The parents informed this fact to maternal grandfather of the Gajendra Patel, uncle-in-law Gopal Patel and Karan Patel. But they, instead of making him understand, told that if you have got married your daughter, you have to give motorcycle. Thereafter, Chotilal Patel's motorcycle was handed over to Gajendra Patel. Motorcycle was transferred in his name. Despite that, Gajendra Patel continued to beat the deceased. And on account of persistent harassment and torture by the husband, she committed suicide. Next, learned counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed any offense, he is innocent. He has been falsely implicated. He has nothing to do with the demand of dowry and hanging of the deceased. He is Qatar relative and resides in a different village, which is almost how kilometer away? My lord, the kilometer is not there, but my lord, the Samak ID ration card I have filed, my lord, this is different village, page number 9 and 10. Almost more than 20 kilometers away from the place of occurrence. Allegations are against the husband. There is no legal and admissible evidence against him. They have been falsely implicated only because they are Qatar relative of the husband of the deceased. Therefore, it has been prayed that applicant be released on bail. Next, on the other hand, learned counsel for the state has opposed grant of bail to the applicant
but has fairly admitted that applicant is not the resident of the place where husband of the deceased was residing with the deceased. Next, लिखिए. I have gone through the case diary. Present applicant is uncle-in-law (bracket में फूफा ससुर) of the deceased. He resides in a different place. The only allegations against him made by the parents of the deceased is that they had made a complaint to them about the behavior of the husband of the deceased, but they too told that you have to be notified. After investigate charge sheet पेश होगी क्या? My lord, charge sheet is not. charge sheet अभी Without expressing any opinion on the merit of the case, but having taken into consideration all the facts and circumstances of the case, I am of the view that it is a case in which further pretrial detention of the present applicant is not. Consequently, this first bail application under section so and so filed on behalf of correction to case is at 50,000. Overlay, my lord. Yes. 30 to 1 week's time may be granted to produce the case diary. The case should 52. Yes, yes. Sorry, 32. Shri Jagat Singh, learned counsel for the applicant. Reaction on the learned government advocate for the respondent state. As per learned counsel for the state, CD is not. Let it be produced on next day prospectively. List after 1 week. 1 week, madam. Value price. इसमें चालान पेश हो गया है माय लॉर्ड, और चालान में एक जो हमारा एनेक्सर A8 है माय लॉर्ड, A8 के संबंध में पुलिस ने इंक्वायरी की है और रोजनामचा सहाना में भी एंट्री आई है माय लॉर्ड. सर ये देख ले, दिखा दो. पुलिस वाला दिल्ली गया था जांच करने के लिए, वहां से रिकॉर्ड जब्त किए. A8 में हमने वही रिकॉर्ड लगाए, लेकिन चालान में पेश नहीं किया माय लॉर्ड. तो मेरा सबमिशन ये था कि ये वेरीफाई कर लें. बुला लेते हैं सर इसको. A8 देख लीजिए मतलब हम दिल्ली में रुके थे उस तारीख को. घटना दिनांक जो बताई जा रही है उस दिनांक होटल के बिल, आने जाने टिकट, वो सारा हमने पेश किया माय लॉर्ड. होटल के रजिस्टर को जब्त किया. हाँ जी माय लॉर्ड. वो सर हम रिपोर्ट बुलवा लेते हैं सर, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं सर. Manoj Chaturvedi, learned counsel for the applicant. Shri Achanam, the learned government advocate for respondent state. Learned counsel for the applicant has filed photocopy of the Rojanamcha dated 26/11/2022 of the PS Khamaria district Jabalpur. Learned counsel for the state 6 times to verify होती है. To verify the same and to call for the report from the police station concerned about the genuineness of Rojanam entry made in Rojanamcha Sana. List after 2 weeks. 1 week करते सर, बोला लोकल है. 1 week. Yes. Lord, this is first bail application under section 439. The offence is 409 of IPC. The applicant is in jail since 31/10/2022, my lord. The allegation against the present applicant is, my lord, one Ankhalesh Sharma Srivastava, my lord, associate sale officer of SBI Uchhera, filed an application before the police station Uchhera, my lord, alleging that July 2018 to 16th March 2019, some amount approximately 29 lakh rupees has been deposited by somebody to before the bank manager, my lord, Albert Gaurav Surendra, my lord. Later on, my lord, again some amount has been deposited by somebody, my lord, approximately 43 lakhs, my lord, to Albert Gaurav, my lord.
Albert Gaurav, my lord, misappropriated the such amount, my lord. And he said, my lord, by a letter that the 4 lakh rupees has been given by Albert to me, my lord, while gambling. So this is the allegation, my lord. And nothing against me, my lord. Not even a single complaint, not even a complainant has said that the property has been misappropriated by me, my lord. Whether the amount has been delivered to me, my lord, nothing come in the record, my lord. I am in jail, my lord, since 31/10/2022, my lord. Total embezzlement is that of 1 crore and 9 lakhs. 70 lakhs. Yes, my lord. 70 lakhs. 70 lakhs. 29 plus 43. 49. 70 lakhs 44,000. Yes. 714 rupees. That has been done by Albert. When this complaint has been made about 27 lakh 43,097 Yes. by the Madhyapradesh Sehkari. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Total the embezzled money is 70 lakhs approximately. More than 70 lakhs. 70 lakhs approximately. That has been done by Albert, my lord. Albert Srivastav. Albert Gaurav embezzled money is Suren. around 1 crore 10 lakhs. Yes, but after the during the investigation जो उसकी जो सलक वगैरह थी उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया और जब सीज किया गया तो उसमें जो एक्चुअल अमाउंट निकल के आया वो 70,44,714 रुपए निकला. अच्छा, embezzlement. Yes. What are the allegations against? मैं सबमिट कर. No. The first, my lord. As per his argument, the allegation. इनका तो कहना कुछ नहीं है. नहीं, इनका कहना. एलिगेशन सर मेरे ऊपर ये ऑर्डर में आया है. ऑर्डर में आया है. इनका कहना है कि ये एल्बर्ट सूरे वो गैम्बलिंग खेलने जाता था और उस गैम्बलिंग में उसने 4 लाख रुपए मुझको भी दिए थे. तो ये एल्बर्ट ने मुझको दिए थे 4 लाख जो पैसा था इसी विपणन संस्था का पैसा था जिसको उसने गैम्बलिंग में लगाया इसके थ्रू आकाश मनपिया के थ्रू. तो मैं रीड फर्स्ट, my lord. The named FIR registered against the 2 persons, Albert Gaurav Suren and Akash Manpia. And as per the allegation of the Lord FIR, may I read to some paragraphs? Yes. इसमें टोटल उसमें जो डेट किस डेट पे कितना रुपए जो वो हुआ है डिपॉजिट को निकला हुआ है. कुमार मनपिया, you are? I am Akash Manpia. Akash, you are also the employee of the bank? नहीं, No, I am not the employee of मैं that. बता रहा हूँ ये थे वहां पर, ये क्या करते थे ये भी बताता हूँ सर. मैं ये पढ़ देता हूँ. स्लिप संघ के पास हो थे किंतु जमा राशि का विवरण खाते के बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है. इन 8 माहों में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के खाते की राशि उमेश त्रिपाठी और देवेंद्र थपाल द्वारा जमा कराई गई थी. ग्राहक सहायक श्री अलवर्ट ने उक्त राशि खाते में जमा न कराने की बात अपने पत्र दिनांक 26/3/19 के माध्यम से स्वीकार किया है. उन्होंने बताया कि उक्त राशि सट्टा में लगाई गई थी एवं 4-5 लाख रुपए की राशि श्री आकाश मनपिया जो अनुबंधित श्रमिक मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर होते हैं बैंक में लगते हैं, ये वो था वहां पर काम करता था. ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का काम क्या था इसका सर? अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस श्रमिक है. स्वीपर वाला स्वीपर जो भी काम है स्वीपर फोर्स पीरियड का. अगर स्वीपर है and money was given to him by accountant, how he can be held liable? नहीं, उसमें सर ऐसा है कि जो अपने आप को ये एक और ये जो बता रहा है अधिकारी, इसका नाम एल्बर्ट का ये कहना है कि जो हमने सट्टे में पैसे लगाए 4 से 5 लाख रुपए वो मैंने आकाश मनपिया के थ्रू लगाए. ठीक है, लगा दिए जी. Whether this man can be held liable for the embezzlement of the money from the bank? नहीं, उसमें तो लायबल नहीं होगा सर वो, क्योंकि वो बैंक से उसका सीधा कोई संबंध नहीं है. भाई हाँ, it is this Albert. He is the employee of the bank. Yes. And he was interested with he is the cashier, I think. Yes, my lord, cashier. Associated officer लिखा है सर. उसमें सहायक इसमें लिखा है ग्राहक सहायक अलवर्ट. एसोसिएटेड सेल ऑफिसर. इसमें जो गौरव सुरेन है अभी वो एब्सकॉन्ड है सर, फरार है. That's all right, but are the allegations against this man is not okay? All right, some other employee gave him the money and he invested for betting through the present. He invested in betting. He invested in speculation. फुटबॉल मैच चल रहा है जी. ये लगा देना मेरा भी. हाँ. कौन फ्रांस जीत रहा है कि अर्जेंटीना जीत रहा है? वही है सर, है ना जी. He can be held. और ये है कि सट्टे में लगाने के लिए 4-5 लाख रुपए. 409 तो नहीं बनेगा इसके खिलाफ. नहीं, वो तो नहीं सर, वो तो लिखिए शीट प्लस एम्प्लॉय नहीं है ना बैंक का, इसलिए लेट ट्रांसफर फॉर द एप्लीकेंट.
reaction on the learned government advocate for respondent state. This first bail application, charge sheet has been filed? नो सर, अभी इसमें एब्सकॉन्ड है गौरव सोरेन जो है वो एब्सकॉन्ड है, चार्जशीट पेश नहीं हुई है इसमें. चलिए This first bail application under 439 of CRPC has been filed on behalf of applicant Akash Kumar Manpia for grant of bail. Next, applicant has been arrested in connection with crime number 347/19 of PS Uchehra, district Satna for commission of offence under section 409 of IPC. He is in detention since 31/10/2020. Learned counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed any offence. He is innocent. He has been falsely implicated. He is not an employee of the bank. He is not a regular employee of the bank. He is a sweeper. Yes, my lord. He is a sweeper on contract basis. As per my lord, police इसमें जो आया है अनुबंधित श्रमिक मतलब Contract है ना, he is a sweeper on contract basis. He has nothing to do with the embezzlement made by bank employee Albert and Gaurav and others. No offense under section 409 of IPC is made out against him. Investigation is still underway. After conclusion of the investigation, trial of the case will take comfortable time. Therefore, it has been said that applicant accused be released on bail. Next, on the other hand, learned counsel for the state has opposed grant of bail to the applicant. Next, as per the prosecution story, an FIR has been registered against Albert, Gaurav and Suren about embezzling of an amount of almost 72 lakh from the district cooperative, from the MP state cooperative marketing limited, Uchehra पुलिस का ये आ गया इनका लर्नेड काउंसिल का आ गया, लर्नेड काउंसिल नहीं स्टेट का आ गया. My lord, may I submit? Albert Goran Surin is a one person. अच्छा, single person. अल्बर्ट Goran Surin. वो एक ही है सर, वो एक ही. इसमें तो सब में कॉमा लगा के बताया. हाँ. नहीं वो एक ही है सर, वो इसमें एक ही व्यक्ति है. चलिए क्या लिखा? गौरव सुरेन फॉर नहीं अल्बर्ट गौरव सुरेन. Uchehra, the allegation against the present applicant is that Albert had given an amount of almost 4 lakh to the present applicant to invest the same in betting. As far as the present applicant is concerned, he is a sweeper and contract employee. He was not interested with the receiving and disbursing of benefit. Therefore, without expressing any opinion on the merit of the case, but having taken into consideration all the facts and circumstances of the case, I am of the view that it is a case in which I prefer certified copy. Further pre-trial definition of applicant accused is not warranted. Yes? I prefer certified copy, madam. Therefore, allowed. Obliged. After 10 minutes. My lord.
Yes. Kindly urgent, Lordship. Kindly urgent for next week, Lordship. Yes. Shri Manish Mesram. Manish Mehta, learned counsel for the applicant. Everybody has a learned government advocate for the respondent state. Spread by learned counsel for the applicant list after 2 weeks. Yes. Would the first application 439 sir offenses under section 341, 323, 224 and 326. Would in this case initially the FIR under section 341, 323 and 324, 34 of IPC has been registered. Thereafter, the offense under section 324 and the 25 of Arms Act has been enhanced. What the in this case, the role of the applicant is very limited. Moderate, kindly see, may I read the Dehati Nalsi? What the in this case also the date of incident is 4/9/2022. The FIR was the Dehati Nalsi was on 6/9 moderate. What the in the Dehati Nalsi moderate ये मैं उसको पढ़ देता हूँ. पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त पत्र रहता हूँ, वेयर हाउस में काम करता हूँ, भोपाल 3-4 दिन पहले आया था. मैं अपने दोस्त अमर यादव, आकाश यादव से दोस्ती होने से आता जाता रहता हूँ. दिनांक 4/9/22 को करीब रात्रि 8:30 बजे की बात है कि मैं और मेरा दोस्त अमर यादव, आकाश यादव एक ही स्कूटी सफेद रंग की, जिसका नंबर मुझे पता नहीं, स्कूटी आकाश की है, गैस गोडाउन इंडियन कंपनी से गांव होते हुए बस से मिसरौद से बैठने के लिए आ रहे थे. जैसे ही गुराड़ी गांव के आगे मोड़ पुलिया के पास पहुंचे तो सफेद रंग की कार में 3-4 लोग खड़े थे. 3-4 लोग बता रहे सर, जिसमें राजेश शर्मा, सुमित शर्मा, ये सुमित की बेल है सर, वह अन्य खड़े थे. फिर इन लोगों ने हमें रोका, हाथापाई चालू कर दी. फिर मेरे साथ वाले लोग मौके से मुझे छोड़कर भाग गए. राजेश शर्मा ने चाकू निकाला और मुझे पेट में मार दिया. राजेश शर्मा is your father. Yes, murdered. But so far the allegation of this applicant, I am not filed the bail application of Rajesh Sharma, and murdered the delay is also there murdered. और इसका जो फंसाने का विशेष है वो भी बता दूं मैं सर कि this Sumit Sharma has lodged the complaint against the जी जो दो अमीर इन ब्रदर ऑफ दी अमर यादव और आकाश यादव जो कह रहे हैं कि हमारे साथ में थे. In white crime number 607/2022 before पुलिस स्टेशन मॉडर्ड एंड दी मैंने इसमें भी मेंशन किया अपनी बेल एप्लीकेशन में सर 7/06/2020 फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 294, 329, 342, 327 इन विच दी माय लॉर्ड हैज आल्सो नहीं नोटिस की जरूरत नहीं है इसमें, ये SC/ST नहीं है. 324, 323 इनिशियली रजिस्टर्ड हुआ, बाद में 326 एनहांस हुआ है सर. वन केस अंडर FCFT एक्ट. हाँ वो उसमें वो कह रहे जी सर वो. और इसमें सर जो SHO ने क्वेरी भी मांगी है, इस 3 विषय पर स्पेसिफिक क्वेरी मांगी थी डॉक्टर से. क्या फरियादी मुकेश मांगरोल को आई छोटे शरीर के वाइटल पार्ट में है? क्या फरियादी मुकेश मांगरोल को आई प्राणघातक छोटे प्राणघातक है या नहीं स्पष्ट? या फरियादी की चोट आई किस किस्म के हथियार से आ सकती है? इसमें उन्होंने दिया है नो वाइटल पार्ट इन्वॉल्व, फर्स्ट का दिया सर नो एबव इंजरी ग्रीवियस इन नेचर, और थर्ड का दिया इंजरी आर ड्यू टू हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट. इंजरी इज नॉट ग्रीवियस इन नेचर. यस माय लॉर्ड, इसमें तो लिखा है कि नॉट. This is the query report. Investigation has completed. Charge sheet has been filed. Mode. And the man accused is the Rajesh Sharma, not the Sumit Sharma. Mode. TVS एक और केस है माय लॉर्ड. हाँ वो तो रिजेक्शन ऑर्डर में ही इसी साल का है, 2022 का. और केवल जो मैंने बताया सर कि वो फॉल्स इम्प्लीकेशन है, वो हमने एक FIR कराई थी, वो उसका रीजन है. ये तो लिखा है नो एंड अबव इंजरी ग्रीवियस नेचर. यस सर. क्या इसका मतलब निकला? जो इंजरी जो है ग्रीवियस इन नेचर नहीं है. नो एंड अबव लिखा है जी सर, लेकिन वो उसका दिस इज नॉट क्लियर कट. if the Mallard has seen the Mallard, so far the grievous injury is concerned, also there is no allegation against this applicant. So do you mean that
Stomach is not the abdomen is not the vital part of the body. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सर, वो इंजरी स्पेसिफिक उसने कहा कि राजेश शर्मा ने चाकू मार दिया। इसमें और एक बात और है सर, वो कह रहा राजेश शर्मा अन्य और 4 लोग को बता रहा है, बाद में उसमें देखेंगे। आप ये टाइप एमएलसी पेश करिए। यस मैडम। पूरा ये जितना ओपिनियन समेत जितना भी है सर मेरा थोड़ा सबमिशन इसमें सुन ले, क्योंकि वो एक के लिए मैं मान सकता हूँ, राजेश के लिए इसमें सर देख एक चीज देख लें सर, वो एफआईआर में बस एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो कह रहा है राजेश 3-4 लोग खड़े थे, 2 का नाम ले रहा है, 2 का अन्य। एक आप कह रहे नहीं है, इसमें डॉक्टर पवन सिंह लिख रहे हैं ये जो एमएलसी रिपोर्ट है सनशाइन हॉस्पिटल की, ग्रीवियस इन नेचर। सर वो लेकिन मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि ग्रीवियस इन नेचर अगर है भी इंजरी तो वो राजेश शर्मा ने कॉज किया है, ये सुमित शर्मा ने नहीं किया। और इसमें एक चीज तो देख लें सर, उसमें वो कह रहे हैं 4 लोग, एफआईआर केवल 2 लोगों के खिलाफ है। टाइप पूरी रिपोर्ट यस मैडम। ठीक है, श्री उपाध्याय लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री संदीप दुबे लर्नेड पैनल लॉयर फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट। Learned panel lawyer for the state is directed to submit typed MLC reports and the opinion reports. Sir, kindly consider while application of this application, because he is not a man accused, my lord. So only allegation he is standing with. I am not going to decide it. Next after one. MLC report इनका क्लियर तो हो क्या? नहीं, लेकिन अब वो एफआईआर इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा सर? वो साफ कह रहा है कि चाकू उसने मारी है। Next. Civil application under section 439 of the CL. The applicant is in custody since 27/4/22. Investigation has already been completed. Charge sheet has already been filed. Lordship, the fact of the case is that फर्जी जमानतदार। लॉर्डशिप, हाँ, ये एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं है, हम हमारे ऊपर 419 भी नहीं बनता सर, 20 भी नहीं बनता, 467, 468, 471 भी नहीं बनता है। क्या है आप? लॉर्डशिप, द पुलिस पार्टी हैज रेडेड द आउटसाइड ऑफ द कोर्ट एंड वन सलमान वाज अरेस्टेड, लॉर्डशिप, फ्रॉम हुज पोजीशन he was found, in which the photographs of the Salman has been endorsed, but the name of the another person has been reflected, lordship. And on the memorandum of that Salman, संदीप कुशवाहा was arrested, lordship. उसका भी यही रोल है सर, राजेंद्र हमारा मेमोरेंडम पे हमको अरेस्ट किया है और ये एलिगेशन लगाया है कि हम इनको काम प्रोवाइड करते थे। क्या? आई हैव प्रोवाइडेड जॉब टू देम, एडवोकेट हैज कॉन्टेक्टेड मी एंड आई हैव प्रोवाइडेड जॉब, हम बताते थे कि वहाँ पे काम करना है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल 161 स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड which says that particular thing, lordship. And one वही was seized from my possession which is a blank one, उसमें ना मेरा नाम है ना किसी का नाम है, ऐसा बता रहा है ये एलिगेशन। यस, इसमें 5 एक्यूज थे माय लॉर्ड, सलमान शाह, संदीप कुशवाहा, राजेंद्र, गणेश और लोकेश। तो ये जो 3 थे, राजेंद्र, गणेश मकवाना और लोकेश यादव, ये तीनों क्या है कि फर्जी जमानत कार्य में उसका सहयोग करते थे। नहीं, इसका स्पेसिफिक रोल क्या है? ये रंजीत सिंह मीना बनके इसने 9 जमानत ली है, एक में ये 2 बही थी इनके पास, तो एक से इनने 9 जमानत की है और दूसरी बही से 3 जमानत की। नहीं, किसने ली? मैंने। उसने ली, पर प्रोवाइड तो आप लोग ही कराते थे। सलमान ने लिया भाई, पर प्रोवाइड आप लोग कराते थे और इनको आप लोग नहीं, इनके खिलाफ स्पेसिफिक बताइए क्या एलिगेशन? इनका यही है हमारे लड़की, ये फर्जी जमानतदार बन के और उसको कहते थे तुम जमानत ले लो, और वो खड़ा हो जाता था फर्जी वही। फर्जी जमानतदार बनने के लिए लोगों को उकसाते थे। यस मैडम, यही है एलिगेशन। वही भी प्रोवाइड कराते थे। तो इनसे कितनी वही जब्त हुई? इससे 1 हुई है। अरे ज्यादा होनी चाहिए थे ना अगर कराता था। तो ये बाकी उसको दे चुके थे। इसको सलमान साहब को। तो किसी प्रिंटर के बयान लिए जिसने इनको वही उपलब्ध कराई थी? वो तहसीलदार भोपाल से जानकारी ली थी, तो उनने बताया कि हमारी तहसील हुजूर से कोई ऋण पुस्तिकाएं अलग से जारी नहीं हुई। इनके पास से जब्त क्या हुआ बताइए? इनसे 1 कोरी बही। एक कोरी बही के आधार पर कैसे इनका निकाल लोगे इन्वॉल्वमेंट? और उसने मेमोरेंडम में बताया है कि ये हमको प्रोवाइड कराते थे। इसके पहले भी 3 जेल जा चुके। और लोगों की जमानत के क्या हुआ? 2 लोगों की विड्रॉ हुई है, सलमान और इसकी, मैं देखा उसको। और इनके रोल ये है कि सर दे वे आर अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड फर्निश द सिक्योरिटी
सलमान और एंड रंजीत, राजेंद्र, हाँ राजेंद्र तो अच्छा, इनकी विड्रॉ हुई है। इनकी विड्रा हुई है बिकॉज देयर रूल वाज दैट दे वर अपीयर भाई। बिफोर। दे देना डायरी दे यस माय लॉर्ड। इसके पूर्व भी ये तीनों जेल जा चुके हैं माय लॉर्ड। इनका काम ही है फर्जी जमानत लेना। इनके खिलाफ और भी कोई पहले का केस दर्ज है क्या? जी पहले का है, उसके मेमोरेंडम में आया है गणेश मकवाना के। तो इनका फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड बुला लीजिए आप अगर ऐसा। यस माय लॉर्ड। ठीक है, देखिए श्री एम सफीकुल्ला लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री संदीप दुबे लर्नेड पेनलाइट फॉर द स्टेट learned counsel for the learned penalty for state 6 a big time to trial court के लिए furnish the criminal antecedent of the applicant as per list after 1 week. Okay. CD not available my lord. Shri, your good name? सौरभ पटेल, सौरभ कुमार पटेल। Saurabh Patel. Saurabh Kumar Patel, learned counsel for the applicant. Shri Sandeep Dubey, learned penalty for respondent state as per learned penalty for the state. CD is not available. Let it be produced on next date positively. List after 1 week. This case, my lord, please kindly call the DNA report, my lord. आ गई my lord, उसमें पॉजिटिव आई है। DNA report. हाँ हाँ जैविक पिता है। Yes, argue it. DNA report देख लें, my lord. हमारी नॉलेज में DNA report. आरोपी कुंवर लाल नवजात शिशु का जैविक पिता। इसको आफ्टर विंटर वेकेशन रखें। ऐसा नहीं आर्गू करिए, जब डायरी इज अवेलेबल डायरी अवेलेबल है, फर्स्ट टाइम लिस्टेड है। डीएनए रिपोर्ट का नहीं मालूम था। और इस पे माय लॉर्ड अभी इंदौर बेंच का एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था, 250 पेज का जजमेंट ट्रिपल मर्डर केस का था, जिसमें यही हेल्ड किया गया कि अकेले डीएनए के बेस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। मर्डर में नहीं, किसी भी केस में, किसी भी केस में। ठीक है, तो आपका है ना, उसमें मतलब डेथ सेंटेंस था, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। आपका आर्गुमेंट लिख लेते हैं ये। हाँ लिख लेना। अब अभी मैं 5 मिनट बाद वो रूलिंग भी बता दूंगा। लेके आओ, है? कहीं कोई वो नहीं कि इसमें उन्होंने ये हेल्ड किया है। थोड़ा पास even and otherwise my lord is interested to decide, then my lord I have also cited the various judgment that the bail application cannot be decided by way of the punishment, my lord. And my lord, now the statement of the prosecutrix and other witnesses has been recorded it, so there is no chance of the tampering of the evidence, my lord. I have also cited the you file all the cases, all the case laws. Okay, chalo next. This is second application section. 40 CD not available, my lord. CD not available. Shri Sunil Kumar Mishra, learned counsel for the applicant. Shri Sandeep Dubey, learned penalty for respondent state. As per learned penalty, CD is not available. Let it be produced on next step possibly. List after 2 weeks. After 1 week, Yes. This is the fourth bail application. Earlier bail application has been dismissed as withdrawn, my lord. My lord, third bail application has been dismissed as withdrawn with the direction to the trial court decide the trial within a period of 6 months, my lord. That order is page number 9A. Order dated 28/3/2022, my lord. Trial is still pending, not decided. Present applicant is in custody more than 3 years, my lord. About near about 4 years. Lord, if my lord status report is required for my lord's consideration, then maybe call my lord. Call for the status report. लिखिए श्री RN Dwivedi. RN Dwivedi, learned counsel for the applicant. श्री ग्रेवियस इंजरी है my lord, और वो बच्चे की डेथ भी हो गई। संदीप दुबे, learned penalty for respondent state. Call for the status report of ST number
160219 State of MP versus Sanjeev Pandey. Section 302 of IPC, pending on the case file of 11th additional of Sanjay Jariwala. List after 1 week. Yes. Last date of the hearing, my lord was kind enough to pass the order. My lord may kindly see the last date order. Learned counsel for the state was directed to produce the transcript of the case diary, but the same has not been produced so far. CD has been attached with the case diary, but the same cannot be displayed in the system in the court. Therefore, learned counsel for the state is directed to furnish the transcript of the CD along with the pen drive in which the entire material of the CD is copied. If the transcript is not produced on the next date of investigating officer of the case shall remain present to explain the delay for not furnishing the transcript. This is available today. Today is available. डिस्प्ले कर दें सर, देख लें. ट्रांसक्रिप्ट और सीडी क्या? हाँ. पेन ड्राइव. पेन ड्राइव. पेन ड्राइव भी है, सीडी भी है और उन्हें ट्रांसक्रिप्ट भी. उसी में सच्चाई है. उसमें ये पूरे स्टेटमेंट में आया हम लोग कि इन्होंने पहले मारा और फिर घर के अंदर भाग गए और फिर उसके बाद घर वाले हम तो चाहते हैं सब पेन ड्राइव देख लें सर. नहीं, पेन ड्राइव में ये नहीं दिख रहे. अरे ये नहीं दिख रहे हैं, बस पेन ड्राइव में ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले उसको चोट पहुंचाई, उसके बाद घर भागे और घर में और परिवार के लोग. नहीं, पेन ड्राइव ये नहीं दिख रहे हैं. नहीं दिख रहे हैं. कोर्ट फिर कब मार के भाग गए? अगर सीसीटीवी वी आर इंस्टॉल्ड देयर, जो वीडियो बनी है मुलोट, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है सर. वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे फेवर में है, इसलिए सप्रेस करते रहिए. वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मुलोट वो कुछ देर बाद से बनना स्टार्ट हुई है, जिसमें ये नहीं दिख रहे हैं. अच्छा, ये नहीं है. ये नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में ये नहीं. इनका भी यही आर्गुमेंट है. मतलब इसमें इनको बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं. ये मैं रचना के सब आर्गू कर देता हूँ. यस, रचना राय. एक मिनट. यस, नो डाउट. द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ये है कि इसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट, उसकी वाइफ शारदा राय को विनय ने मारी है कुल्हाड़ी. हाँ, मेन विनय ने मारा है. जो उसको हम पे भी चोटें हैं, हमारी वाइफ पे चोटें हैं, सिर पे ऑक्सीपिटल रीजन में बेटे का फ्रैक्चर है जिस विनय को मारा है. और काउंटर केस है जिसमें ऑफेंसेस ये जो है रचना भी मुलजिम है, उसका पति भी मुलजिम है, उसके 2 बेटे भी मुलजिम है. इनके खिलाफ एलिगेशन ये है चिप्पू राय हैं. शिवम और विजय को मारना बताया, सिंपल इंजरी. इन्होंने मारा शिवम को. इंजरी शिवम क्या नेचर ऑफ इंजरी क्या? सिंपल इंजरी बस. और विजय को मारा सिंपल इंजरी. ठीक है, इट इज केस ऑफ verified. This grievous injury has been caused by this शिवम और विजय. विनय ने की है रचना. This is caused by और रचना को काउंटर केस में मुलजिम है. माइलॉर्ड रचना को भी बहुत गंभीर चोटें हैं माइलॉर्ड. इसमें जी. Yes, but that injury has been caused by the Vinay. लिखिए श्री Ahadullah Usmani, learned counsel for the applicant, Shri S.K. Other Deputy Government Advocate for the respondent state. You are for your good name? Is for the complainant. Complainant Parvati Patel. Miss Parvati Patel, net counsel for the objector complaint. This first bill application under section 439 of CRPC has been filed on behalf of applicant Sanjay alias Chippu Rai for grant of bail pending the trial. Next, applicant has been arrested in connection with crime number 197/22 of PS Jatara District Tikamur for commission of offence under section 323, 324, 294, 506/34 of IPC and 34 and 307 and 326 of IPC. Next. He is in jail since 8/9/2022. Next. As per the
prosecution story on (37) 2022, Shibam Roy lodged an FIR in PS Jatara, stating that on 37 2022 at around 10 p.m. he was standing outside his home. He was standing in the street outside his home. In the meantime, Sanjay Das Chippura, who is his neighbor, came and started to abuse him. When he asked them not to abuse, her mother, Rachna Roy, also reached there and asked Chippura to leave the place and took him inside the house. In the meantime, Chippura, Binarai, Ittarai, and further came from the behind. Parda and Itta caught his mother, and Binay gave a axe blow on the nose of the mother, Rachna Roy. When he went to rescue his mother, Chippu alias Sanjay, forcibly laid him on the earth and gave a axe blow causing injury on the back of his neck. When his brother Vijay came to rescue, Chippu also gave a axe blow on his head. When his father came to rescue them, Chippu and his son Vinay abused and threatened to do death in future or to implicate in a false case. FIR was registered. The injury caused on the nose of Rachna Raj was found to be grievous in nature and dangerous to life. Next, learned counsel for the applicant has submitted that applicant has not committed any offense. He has been falsely implicated. He is innocent. It is submitted that both parties have lodged a FIR against each other, and after investigation, charge sheet has been filed against both the parties. It is further submitted that present applicant had not caused the life-threatening injury on the person of Rachna Rai. It was caused by Vinay Rai when Rachna Rai was got hold by the Itta Rai and one other. It is submitted that Vijay and Shibam have sustained simple injury, and those injuries are alleged to have been caused by the present applicant. As injuries are simple in nature, he cannot be held alive for commission of 500 Section 307 of IPC. The present applicant and others from his side have also sustained injury. Therefore, it has been prayed that applicant be released on bail. Next, on the other hand, learned counsel for the state as well as learned counsel for the objector has opposed grant of bail.
it is undisputed that counter FIRs have been lodged against both the parties. The injury of Rachna Rai was life-threatening and grievous in nature, but Sam has been caused by the Binay, not by the present applicant. Present applicant is in jail for last more than 4 months. 8-9 से जेल में. for last more than 4 months, no, more than 3 months. Therefore, without expressing an opinion on the merit of the case, but having taken into consideration the fact and circumstances of the case, I am of the view that it is a way in which applicant Sanjay Lyasipura may be released for allowed 50,000. Obligation. Four 39, my lord, first application. The prosecutrix, my lord, stayed with the applicant for 7 months, my lord. The date of incident is 22nd of February 22. And she was recovered, my lord, on 1/9/22 after a lapse of 7 months, my lord. The 161 statement, my lord, which was recorded. I'll just read the relevant part, my lord. Charge sheet has been filed, my lord. Investigation has been completed. Yes. मेरे गांव के पास गांव लखनपुर में सरमन अहिरवा रहता है, जिसे मैं करीब 3 साल से जानती हूँ। एक दिन सरमन मुझे मिला, मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तो उस समय मैं अपनी माँ और घर वालों से गुस्सा थी, तो मुझे सरमन की बात बहुत अच्छी लगी और फिर धीरे धीरे मैं सरमन को पसंद करने लगी। फिर सरमन ने मुझे अपना फोन नंबर दिया, हम दोनों फोन पर बात करने लगे। एक दिन सरमन ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी सरमन के साथ रहना चाहती थी, पर मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी सरमन से करवाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। दिनांक 22/2/2022 की बात है। सरमन ने मुझे फोन पर बात की और मुझसे कहा कि तुम मेरे टपरे तक आ जाना, मैंने तुम्हें वहीं मिलूंगा। उसी दिन गांव के हरिचरण के लड़के का जन्मदिन था, तो मैं और मेरी दीदी ललिता, हम दोनों हरिचरण के घर जन्मदिन में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में मैंने अपनी दीदी ललिता से कहा कि तुम हरिचरण के घर जन्मदिन में चली जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं वापस घर जा रही हूँ। और फिर घर ना जाकर मैं सरमन के टपरे पर चली गई, जहां से सरमन मुझे बस से विदिशा ले गया। विदिशा रेलवे स्टेशन के पास सरमन ने किराए के रूम में मुझे रखा। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। तब से हम दोनों पति पत्नी की तरह विदिशा वाले किराए के रूम में रहने लगे। फिर एक दिन सरमन मुझसे कहने लगा कि विदिशा में मजदूरी नहीं मिल रही है, तो वो मुझे इंदौर ले गया और इंदौर में भी उसने मुझे किराए के रूम में रखा। वहां भी सरमन मेरे साथ पति पत्नी वाले संबंध बनाए। Now, my lord, as far as, my lord, the age of the prosecutrix is concerned, my lord, if your lordship may see the date of birth which is mentioned in the charge sheet, my lord, is 8/10/2005. So as per that, my lord, the age of the prosecutrix, my lord, is 16 years, my lord, and 7 months approximately. And when she was recovered, my lord, that was about 17 years. And, my lord, as far as, my lord, marriage and other things are concerned, we filed those photographs on record as well at page 13. And her Samagra ID shows, my lord, in fact, according to that, to get government benefits, my lord, and the benefits of government programs, her age, my lord, seems to be more than 21 years. That is the Samagra ID at page 16. Yeah, what is her name? Sorry? What is the name of the prosecutrix? My lord, I was not taking the name of the prosecutrix, my lord, I'll just point out. Yes, at which number her name is shown? Yes, my lord, just. My lord, serial number 4. She was 16, my lord, on 3/3/2013 at the time of the registration of the Samagra ID. But this age is not relevant. Anyways, my lord, I'm just pointing that out. And your lordship may kindly, my lords are already aware, my lord, as far as this part is concerned, she is, my lord, on the brink, my lord, of majority. And So let us wait for her statement before the my trial. lord, he's behind bars since 2922. I was just pointing out, my lord, just one recent, my lord, this Bombay High Court judgment where your lordship has taken Bombay High Court, Karnataka High Court is सारे एक साथ वो थे. Your lordship may kindly see is a very interesting one, my lord. I just wanted to point that out. In fact, this has been also followed by coordinate benches of this court, where, my lord, girls aged 16 years, my lord, the bail have been granted. I was just pointing out the compilation, my lord. The Bombay High Court judgment, if your lordship may kindly have.
we just have page 7, my lord. Page 7, my lord. My lord, this entire fact of why, my lord, this particular age now should be reduced to 16. My lord, and on the basis of this now, my lord, my lord, recommendation has been made by the Supreme Court in one of the recent pronouncement that high time, my lord, that we make it 16. My lord, page 7, if your lordship may kindly have this, of the compilation, my lord. Is the Bombay High Court judgment, my lord, it takes into consideration Nirbhaya. Also the fact that, my lord, why in cases of love affairs, my lord, that it should not be taken, my lord, in light of, my lord, the Nirbhaya case. Para 6, my lord, is Nirbhaya. Para 7, my lord, is S. Vardharajan, my lord, may kindly see. In the case of S. Vardharajan, though the age of consent, though as per law was 18, when the girl eloped with the accused, she was approximately 17 years and 9 months. The Honorable Supreme Court in the case of S. Vardharajan has distinguished Section 361 on the point of taking from guardian or enticing the girl, and the girl herself leaving the house of the parents of her own and accused allowing her to be in his company, and has held that in not a case of rape, in case of S. Vardharajan, the matter was finally heard and the accused was convicted. In appeal, the decision of the Honorable Supreme Court can be curled out that if a girl takes initiative or she is active in taking decision of going away with the boy, and she understands the meaning of man-woman relationship and of marriage, then the rigor of offence is reduced. It is noted that the case of S. Vardharajan was decided in the year 1967 when the women were not enjoying the freedom which today the women have. Albeit the Supreme Court then has taken a pragmatic view and has acquitted Vardharajan. Now we come across such cases every day. If a girl is a minor between age group of 15 to 18 years, and if it can be safely inferred that her consent was obvious, then it is a mitigating circumstance. Some trial courts dealing with such bail applications, especially after Nirbhaya case, started taking a strict approach, and the accused are denied the bail only on the ground that the prosecutor is being minor below 18 years, her consent is immaterial. Therefore, in the case of rape on such minor, no bail can be granted. This is a matter of concern. In view of the increasing offense against women, especially of rape, the legislature and judiciary both found it obligatory to deal these offences where severe punishment and women can be protected if the laws are made rigorous. Therefore, report of Justice Verma committee was accepted and necessary and significant amendments were made in these two sections. A wrongdoer is to be punished, guilty is to be convicted. However, at the stage of bail, the court has to consider prima facie under what circumstances the offence is committed by the accused. In criminal law, the court cannot ignore the intention or motive behind the act, and that is an important factor in commission of offence so as to decide the quantum of sentence at the end of the trial. So in the case of bail, the offence of rape can be distinguished on the basis of intention of the accused. There are incidents of rape committed by gang like that of case of Nirbhaya or Maya Thyagi or Mathura, which cannot be forgotten by the Indian society. But they go on that, and then your lordship may kindly see the most important point, my lord, is my lord, paragraph 11 and 12. And this is what, my lord, has been considered by this honorable court as well. Today, teenagers are exposed to more sex-related issues, and lot of material is also available to them to know the sexual relationship between a man and a woman. Because of this impressionable age, girls and boys both may tend to get provoked, and they can be curious and very compelling demand of body to get into such kind of relationship. Sexual urge differs from person to person. There cannot be any mathematical formula in respect of sexual behavioral pattern of teenagers, as biologically whenever the child turns into puberty, the child starts understanding his or her sexual needs. The nature of response depends on the upbringing, peer pressure, how civilized the environment is, etc. Sex requires proper physical and emotional preparation and results in many physical and emotional consequences. This is all considered as a sexual maturation. Therefore, some sects which views to regularize sexual behavior of the community have acknowledged this biological factor, and therefore the early age of marriages are performed in some religious or communities. Taking into consideration this social and biological factors, the lawmakers consider the age of 15 as an age of consent when the marriage is performed. Taking into consideration this background, the trial judge has to pass orders on bail in such cases. The overall consideration while deciding such applications can be summed up as under. When a boy and a girl, minor girl, are in love and with each other and chose to live together without consent of their parents, then the following factors are to be considered. What is the age of the prosecutrix who's minor? Whether the act is violent or not? Whether there are antecedents or not? Whether the offender is capable of repeating the act or not, whether there is likelihood of threats or intimidation if at all the boy is released, whether any chance of tampering with the material witness when the statements are recorded. It will also be taken into account in such cases that a boy in his early 20s deserves to get employment and to plan stabilize and secure his future. In the present case, the prosecutor is 15 and the accused is 20. It appears from the record statement of prosecutor's witness they were in love. So they eloped and went to the temple. There they garlanded each other, and according to them, they performed marriage, and thereafter they started residing together in the house of their relatives. In between, prosecutrix called a distant aunt and requested her to make arrangements of some money, and she disclosed that she is married and wants to stay with the applicant. Now, my lord, on the basis of this was done. Similar, my lord, is page 11 is Delhi High Court.
same principles, my lord, detailed, my lord, guidelines have been laid down at page, my lord, may come to page 13. My lord, in fact, the Delhi High Court went on to make, my lord, 12 guidelines on this issue. Same, my lord, is the case, my lord. Now, my lord, from page 17 onwards are all those orders, my lord, between 15 to 17, my lord, where this honorable court has granted bail. Page 17, 19, 21, all, my lord, orders of coordinate benches, my lord. I have filed as many as, my lord, 8 such orders from different benches. But all I'm trying to say is, my lord, that it is in a case where the present applicant, my lord, and the prosecutor, the present applicant is 22. The prosecutrix, my lord, was 16 and a half. When she was recovered, was more than 17. Now, it is a clear case where, my lord, everywhere it is coming forward, my lord, that the girl, my lord, voluntarily resided with the applicant for more than 7 months. All I'm saying is, my lord, he has cooperated in investigation, he'll cooperate in trial. Okay. Next. This is first bail application under section 439, Lordship. The offence as alleged against the present applicants under section 306, 376 and 506 of the IPC, Lordship. The prosecution story that previously one FIR was registered by the prosecutors under section 354 against the applicant Bablu Saket, that he was torturing her and pressurizing to withdraw that FIR. Yes. This is the story in this present case. Under section 354, which was registered in that, the applicants have been granted bail by the learned lower court, Lordship. In this case, Lordship, my submission is that for the abatement of a suicide, the ingredients under section 107 must be there, Lordship, because in various cases, this Honorable High Court and the Supreme Court has observed that mere the torture or physical harassment is not comes under the purview of section 306 or 107, Lordship. And more than, Lordship, the challan has been filed. They are in jail for more than 2 months and 10 days. And investigation has been completed, Lordship. एंड ये जो इनके फादर और मदर का स्टेटमेंट आया है, इसमें 376 के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि इन्होंने कभी उसके साथ बलात्कार किया हो। सिर्फ ये कहा है कि छेड़खानी की पहली रिपोर्ट हुई, उसको विड्रॉ करने के लिए प्रेशर देते थे, इसलिए लड़की ने सुसाइड किया। जब लड़की सुसाइड कर ली, उसके बाद पीएम रिपोर्ट में आया कि वो गर्भवती थी, और चूंकि हमारे खिलाफ ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड हो चुका था 306 का, इसी में इन्होंने 376 बढ़ा दिया। यस यस मतलब मैरिड फर्स्ट एफआईआर में इसमें डीएनए रिपोर्ट आई क्या? उसका बिस्रा प्रिजर्व हुआ है, मतलब अभी अवेटेड ब्लड सैंपल प्रिजर्व हुए, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं है। वो बोल भाई एसपी माय लॉर्डशिप, मेरे इसमें निवेदन ये है कि जैसे लड़के के खिलाफ था छेड़खानी का आरोप, अगर कहें तो उसका विड्रॉ कर देते हैं। फादर तो उसमें नहीं, पहले हमको देखना पड़ेगी डीएनए रिपोर्ट के बाद स्थिति क्लियर हुई क्या है, ठीक है ना? कोई लिमिटेड पीरियड, वो पहले तो बिस्रा रिपोर्ट, फिर इसके बाद इसको डीएनए के लिए भिजवाइए सैंपल, ठीक है? श्री रजनीश पटेल, learned counsel for the applicants, pre-ask the deputy government advocate for respondent state. Learned counsel for the state is directed to furnish Mishra report of the deceased. Okay, list after 2 weeks. May please the lordship. On the last date of the hearing, sir, my lord was kind enough to pass the following order. Learned counsel for the state seeks a week's time to produce identification report. As a last indulgence, the time is granted to the learned counsel for the state for the same. And the matter was directed to be listed over there. Case of the prosecution is like this, sir. I am the person who is employed in a shop of rubber stamp manufacturer shop. I have been arrested on 8/10/2022.
Nothing has been seized from my possession. There's no criminal antecedents on my record, sir. I am the married person having a small child daughter, aged about 3 years. Case of the prosecution from the impugned order may kindly be seen, sir. The complainant in this case is the bank officer, sir, who had lodged the report on the basis, my lord may kindly see, he has lodged the report like this, alleging that he had lodged the report on 2/10/2022 for the commission of offence in between 1/7/2022 to 31/8/2022. In this case, it is very surprising that the person on whose account the money has been withdrawn has not come forward as a complainant or first informant, and he was silent for the period of about 2 to 3 months. He has not made any complaint. The FIR speaks like this, sir. अज्ञात व्यक्ति नकल नालची जेल है द्वारा धोखाधड़ी कियोस्क बैंक से बायोमेट्रिक डिवाइस माध्यम से रुपए अपादानिक रूप से निकालने का पेश किया, जो अपराध धारा 420 एवं 66 डी आईटी एक्ट का पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया। मध्यांचल बैंक, ग्रामीण बैंक, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम शाखा खटकड़ी दिनांक 30/9/22 प्रति चौकी प्रभारी चौकी खटकड़ी तहसील हनुमानगंज इंद्रपाल सिंह पिता बुद्धे सिंह निवासी इतना थाना हनुमना का मेरे बैंक में खाता क्रमांक है। उक्त खाता क्रमांक से लगातार पिछले 2-3 महीने से चाकघाट जिला रीवा से क्यूएस बैंक के माध्यम से एईपीएस सिस्टम से रुपए निकासी की जा रही थी की जानकारी आईटी विभाग प्रधान कार्यालय सागर द्वारा दिनांक 30/9/22 को मुझे जरिए दूरभाषा नंबर के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मेरे द्वारा खाता क्रमांक के धारक इंद्रपाल सिंह से जानकारी ली गई। तो इंद्रपाल सिंह द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का क्यूएस बैंक चाकघाट से रुपए का लेन देन नहीं किया गया है। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंद्रपाल सिंह के खाता क्रमांक इतना से धोखाधड़ी कर क्यूएस बैंक से बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से अवैधानिक गैर कानूनी ढंग से राशि का आहरण किया गया। इसमें whenever the amount is deposited or withdrawn, always the messages are being sent to the account holder to keep him update. In this case, the man from whose account the money has been drawn has not made any complaint soon after the withdrawal of the money in intervals. Now, sir, from the impugned order, the case of the prosecution which has been built up has come like this, sir. On page number 7 में kindly be seen, sir. It is the impugned order. केस जारी के अनुसार आरोपी उमेश, I am the person named मोहम्मद फिरोज, sir. आरोपी उमेश ग्राम चंदपुर में कियोस्क सेंटर चलाता था। उसके सेंटर पर इंद्रपाल सिंह खाते का बैलेंस चेक कराने आया था, जिसके खाते में ज्यादा रकम देखकर आरोपी के मन में लालच आ गया और उसने इंद्रपाल को यह बोलकर कि सभी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसके अंगूठे का निशान एक प्रिंट कागज पर ले लिया और आधार नंबर लिखवा लिया। इसके बाद उसने मणिराज को पैसे निकालने की योजना में शामिल किया और मणिराज ने उसे बताया कि वह फिंगरप्रिंट बनवाकर दे सकता है। इसके बाद मणिराज ने इलाहाबाद के आरोपी शहाबुद्दीन और भोले से संपर्क किया, जिसने उसके सहयोगी आवेदक मोहम्मद फिरोज, हमारा नाम आया, की मदद से इंद्रपाल का अंगूठा निशान लगाकर दे दिया, जिसका उपयोग कर उमेश ने इंद्रपाल के खाते से अलग अलग अवसरों पर करीब 80,000 रुपए की रकम निकाली। शहाबुद्दीन द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसकी मोहर बनाने की दुकान है और कुछ लोग फिंगरप्रिंट बनवाने भी आते हैं, जिसका उसे ज्यादा पैसा देते हैं। फिंगरप्रिंट बनवाने में आवेदक फिरोज भी उसका सहयोग करता है। फिरोज द्वारा भी पुलिस को मेमोरेंडम में शहाबुद्दीन के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बनवाना बताया है। फिरोज द्वारा फिंगरप्रिंट बनवाने की पूरी प्रक्रिया भी पुलिस को बताई है, जिसका भी पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार किया गया है। इस प्रकार फिरोज का फिंगरप्रिंट बनाने की प्रक्रिया से वाकिफ होना दर्शित होता है। शहाबुद्दीन के आधिपत्य से प्रिंटर, स्कैनर, कलर ये सब बताया, जब्त करना बताया। आरोपी फिरोज से कोई जब्ती होना दर्शित नहीं है। केसदारी के अवलोकन से प्रथम दृष्टा उसकी इन्वॉल्वमेंट भी दर्शित होता। हमारा सबमिशन है सर, जैसा जो केस ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इट फॉल्स ऑन द रिकॉर्ड सर।
नथिंग एक्सेप्ट फॉर द लाइव पर्सन, जिंदा व्यक्ति का अगर अंगूठा कोई भी ऐसी चीज पे लगेगा, अंगूठा तो ही ऑपरेट करेगा। अगर डेड बॉडी या डेड पर्सन का अंगूठा लगाया जाता है ऐसे कियोस्क पे या किसी भी चीज पे, तो वो मनी का ट्रांजैक्शन या कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे इंस्टीट्यूट्स में सर, हाई कोर्ट में भी वो जो अटेंडेंस लगाई जाती है जिससे उनका पेमेंट जो सैलरी बनती है, वो भी जब एम्प्लॉयज आते हैं वो उसमें थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो वो होता। आधार कार्ड बनता है सब, पूरे बायोमेट्रिक्स ली जाती है, एक अंगूठा नहीं लिया जाता, सभी उंगलियां का प्रिंट लिया जाता है, फिर होके आंखों का भी प्रिंट होता है, स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद जाके कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो केस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द प्राइमरी फाई वैल्यू सर, इट इज अ फॉल्स केस, एंड अबव ऑल इफ होल केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज एक्सेप्टेड सर, आई एम merely an employee in the shop of one Shahabuddin alias Bhole sir. I am not the beneficiary, I am merely a servant in that shop sir. Yes. My lord, I am the only the police made the accused only on the basis of operating the kiosk center. मैं केवल Allegation is against you that you withdrew that money. My lord, Man allegation is against you. मेरा तो कियोस्क सेंटर से काम ही है पैसे निकालने का, तो मैं पैसे निकालता हूँ। And getting the forged मतलब as per allegation, as per rejection order 80,000 रुपए का एलिगेशन है कि निकाला है, तो आई एम रेडी टू डिपॉजिट अंडर प्रोटेस्ट माय लॉर्ड। Lord, as per the FIR, Lord, जो मैनेजर है Lord ऋषभ, इनके फोन पे जानकारी रिसीव हुई इंद्रपाल के द्वारा। इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट बोल रही है, इनके मतलब 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, एक पहले का एक प्रेजेंट का, उमेश के खिलाफ, और जो जस्ट एंड फिरोज के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिरोज का नहीं है, फिरोज कर्मचारी है शाहबुद्दीन का, मतलब मैन शाहबुद्दीन है इसमें। यस फिरोज का क्या रोल? फिरोज मतलब कर्मचारी है बस शाहबुद्दीन के यहाँ, और उससे कोई सीजर नहीं है, और शाहबुद्दीन से सीजर है। इनका एक पॉइंट और है जी कि केवल अगर जीवित व्यक्ति का अंगूठा लगता है तो ही विड्रॉल हो सकता है मनी। इस पर आप क्वेरी बताइए, क्या कहना आपका? तो पूरी सैलरी हाई कोर्ट की विड्रॉ होती है। आपका कहना यह है कि केस ऑफ प्रोसिक्यूशन का कि एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया था जी, और फिर बाद में उस अंगूठे के आधार पर मनी विड्रॉल हुआ। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल सर। मतलब इसको लंच के बाद रखने में बता दें, क्लियर कर लेते हैं। लंच के बाद रखने। ठीक, लंच के बाद क्या फरवर? नहीं सर, डेट पे जहाँ में बेल दे दें सर। हाँ, इंक्वायरी ऐसा नहीं, पहले पूरा क्लियर तो लंच के बाद मांग रहे हैं सर, लंच के बाद। वो अंगूठा लेकर के वो किया है तो थोड़ा सा उसको बेनिफिट। चलो बात करिए किसी एक्सपर्ट से, क्या इज इट पॉसिबल? एक्सपर्ट से सर हमारा वो आर्गुमेंट ना कंसीडर करके देखते। नहीं फिर भी एक्ट है ही नहीं, उसमें तो सीखना है, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर, हम काफी दिन से जेल में है। कोई अरे कितने दिन हुए? हमने तो मालिक ने बोला बना दो कुछ भी। अरे कब से जेल में है? हाँ सर 8-10-2000। आई एम सिक इनसाइड द जेल। सो इवन 2 मंथ। आई एम सिक इनसाइड द जेल। कभी ऐसी चीज नेक्स्ट सर वो चीज ऑर्डर शीट में आ जाए सर। क्या? ये तो पॉसिबल में रखिए। नहीं अभी हम आफ्टर लंच बाद देख रहे हैं क्या बताते हैं। आफ्टर लंच करते उसके बाद बढ़ाएंगे अगर बढ़ाना हुआ। पहले पूछ तो लूं। सर इसमें हम एक्सपर्ट की थोड़ा नहीं, जबलपुर में 2 दिन का जो है। अच्छा आफ्टर लंच कोशिश कर लें सर। लिबर्टी का सवाल, लिबर्टी का सवाल है कारण क्या ये क्वेश्चन और भी आएगा। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी। भाई क्या है ये क्वेश्चन और भी आ सकता है ना। नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन। मोबाइल हम यूज करते, लॉक लगाते सर, तो थोड़ा देख लिया। उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। यस नेक्स्ट आफ्टर लंच। ये फर्स्ट वेल एप्लीकेशन नंबर 439 ऑफेंस 8 and 20 NDPS ब्लड एक्विजिशन जेल 25/6/2022। एलिगेशन ये है मतलब कि 3 लोग 2 मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जिनसे टोटल 9 किलो गांजा जब्त किया है। प्रेजेंट एप्लीकेंट से मतलब 6 किलो गांजा जब्ती होना बताया है। दूसरे मुलजिम से 2 किलो 300 ग्राम बताया, और जिसकी मोटरसाइकिल हम बैठे थे उससे कोई जब्ती नहीं बताई थी, और उसकी बेल भी हुई। मैन जब्ती आपसे ही हुई? मैन जब्ती ये हमसे बता रहे हैं 6 किलो। 6 महीने हो गए हमारे।
और सेक्शन 50 की प्रॉपर्टी अब वो सेक्शन 50-42 का कंप्लायंस नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल नॉट ऑफ बेल। वेकेशन करने को टाइम हो जाए आफ्टर वेकेशन 6 महीने नहीं, वेकेशन नहीं, डिसाइड कर देते मेरिट पे, आफ्टर वेकेशन करना मेरिट पे डिसाइड। मतलब 6 किलो है, 6 महीने हो गया हमारे को। नहीं अच्छा, हर महीने नहीं, अभी नहीं, और 1 साल निकालिए कम से कम। 3 लोग थे हमारे नहीं वो ठीक है, 1 साल निकालिए कम से कम। स्मॉल अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, समझ में आता है, बट ये बहुत है। मार्जिन से तो कम थी। लिखिए, This is it is medium intermediary quantity. विड्रॉ कर दिया। श्री उमाशंकर तिवारी, learned counsel for the applicant, Priyas Kya, the deputy government advocate for the respondent. 1 साल हो जाए तब ले आना, बता देना, I will come. As prayed by learned counsel for the applicant, this first bail application under section 439 of CRPC. Filed on behalf of applicant Sheikh Mohsin, dismissed as withdrawn and pressed. First bail application under section 439, my lord. The offence which has been alleged against the present applicant are 376(2) and 377, my lord. ये डॉक्यूमेंट देने का, एप्लीकेशन देने का हुआ था, मेमो पिटीशन इन्होंने नहीं हुआ था सर, मैंने इनको उसमें आप देख लें ऑर्डर शीट में मैंने इनको भेज भी दी। अगर इनको यही करना है अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको दे दिए थे ना डॉक्यूमेंट उन्होंने बोले थे, हमने बताया था, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है इनके मोबाइल में, मैं तो दिखा भी सकता हूँ रिपोर्ट के साथ। नहीं, वो पूछ रहा, मान रहा है कि दे दिया आपने, दे दिया, वो कह रहा है दे दिया। चलिए ठीक है। यस, आर्ग्यू। My lord. The date of FIR is, my lord, 3/10/2022. The present allegation against the applicant is about promise to marry. Yes. The allegation comes forward, my lord, from 2016 to 2018, when both the person was studying at Riva in veterinary college. The age of the girl is 27 years of age and the boy is 25 years of age. Yes. Now, may I permit to read the 164? Yes, I have heard you that day. That day, my lord has heard me. I have heard at length. My lord has heard. Yes, but MLC की एलिजिबल कॉपी नहीं थी ना, इसमें आ गई। yes, but it is you have established physical relations under the misconception of the fact that on the false promise of marriage. No, my lord, there is no case of false promise, my lord, because I have read over on that day also and I have quoted the judgment of Supreme अरे भाई, Court. मैंने कहा था टाइप रिपोर्ट बुलाया करिए आप, ये पढ़ने में नहीं आती हैं प्लीज। हैं? टाइप बुला लेता हूँ। मैंने उस दिन भी आर्ग्यू हुआ था तो उसमें किया था, इसमें आया भी है, हमने दिखाया है, उसमें 2017 की एलिगेशन है सर। नहीं, देखिए, she was an unmarried girl. She was unmarried. Admittedly, she was having relations with you. Sir. But as per the allegations, under the false promise of marriage. For that I have submitted that if I will go, we will go through the statement of 164. वो ये reveal करता है, for the false promise of marriage, the Supreme Court said from very first instant, it has to be established. नहीं, उसका कहना है कि आपने पहले उसकी मांग भरी एंड देयर आफ्टर यू एस्टैब्लिश। इसलिए मैं 164 में अगर आप देखेंगे तो जस्ट उससे पहले वाला पैरा में ये आता है कि इसने मुझे प्रपोज किया, मैंने इसको मना कर दिया, इसने अगले दिन मेरे को कमरे में बुलाया, मेरी मांग भरी और सेम डे उसी टाइम पे जो एलिगेशन से पूरा उसमें उल्लेख किया। इट इज नॉट अ केस ऑफ कंसेंट, इट इज अ केस वेयर गर्ल हैज सबमिटेड हरसेल्फ ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। सर 2016 से 2000। यस, all right, both were unmarried, none of you are married. मतलब इनकी जो लास्ट जो ये वो बताते हैं इनका डेवलपमेंट रिलेशन का, वो 11/1/2022 को। Yes, she is very clearly stated that you called her in her room, thereafter you held sindoor in his mang, and thereafter they established. For that, my lord, the statement of 164 has to be seen in toto. आपने कहा कि अब तुम हमारी बीवी हो गई हो, and thereafter she submitted. Sir, this is the case when the young age boys and girls. No. It is not that. It is not that. It is not that. Even the present applicant is in jail, my lord, from more than. It is not a matter of romantic love. It is a matter of false promise. What about the exception 375? My lord, if my will see
पैरा 7 ऑफ 164 का देखेंगे तो उसमें तो ये कहती है कि मैंने इससे बात करना ही बंद कर दिया था, बाद में इसने वो, क्योंकि ये एस्टेब्लिश तो होना बहुत जरूरी है सर कि जो इंटायर जो टेन्योर है, when you deceived her, all right, it can be she refused to talk with you. No, it is not a fit case for bail. kindly consider that the present applicant is in jail from 2.5 months, my lord. Yes, that's all right. Both are studying in veterinary college. What lawful purpose is going to be solved? You were the student and Both were the students, sir. Even they are studying. He is not a criminal person, my lord. No, that's all right. But it is a case of squarely covers under the exception of section 375. Yes. मतलब एफआईआर के पढ़ने से जबरन शब्द का भी प्रयोग हुआ है, 377 भी लगा है माइलॉट इसमें। नहीं, जबरन अपरन तो नहीं है, सब एफआईआर देखेंगे तो माइलॉट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। 77 ये एफआईआर में माइलॉट आया है जबरन शब्द का उपयोग। काइंडली सी एफआईआर का कॉमन। यस, आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर केस। लिखिए डिफाइड ऑन मैरिज, लिखिए। Well, kindly consider that what lawful purpose is going to be solved, sir. उसको आज रख के there may be possibility that यही तो है कि कहाँ पर ये कैसे सेक्शन अप्लाई हो रहा है, यही तो देखना है इसको। ये इसमें अप्लाई हो रहा है। नहीं सर, काइंडली अप्रिशिएट द जजमेंट। उसमें ये इनका मैं 164 को एक बार ऊपर से पढ़ दूं तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन को फुलफिलमेंट करने के लिए सर इतना वर्डिंग तो प्लांट होगी होगी तब तो जाके, नहीं तो प्योर होगा तो उसमें भी कोई वो। बट हर स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। सर एक बार मेरे को अगर परमिट कर दें सर। यस, पढ़िए। मैं वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक वेटनरी कॉलेज रीवा में पशु चिकित्सा के 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। मैं रीवा में चिरौला मंदिर के पीछे अनिल खैर के मकान में किराए से रहती थी। विवेक पटेल तनय करण सिंह पटेल निवासी ग्राम ठिकरी जिला बड़वानी भी मेरे साथ उसी बैच में पशु चिकित्सा का डिप्लोमा कोर्स किया है। उसी बीच मेरी उससे जान पहचान हुई थी। उस दौरान मेरी बातचीत होती थी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट सर। कई बार उसने मुझे प्रपोज किया किंतु मैंने उसे मना कर दी। ठीक है ना। विवेक कुटिया कॉलेज के पास मकान में किराए से रहता था। फिर वो 17 जून की घटना को बताती है, जस्ट बिफोर वो। अब वही पढ़िए ना। अब हाँ, दिनांक 17 जून 17 को मैं विवेक के बुलाने पर उसके रूम पे गई थी। रूम में उसने कहा कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और ऐसा कह के मेरी मांग भर दिया और बोला कि अब तुम मेरी बीवी हो गई हो, अब हम रिश्ता बना सकते हैं। फिर उसने मेरे साथ उसी समय शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसके बाद हम लोग के बीच एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा और हमारे भी शारीरिक संबंध उसी रूम में बन गए। Yes, on the false promise of marriage. On the first instant, when the girl is even not accepting his proposal, and she has been called next day on same day, जो वो मना कर रही है कि जो उसका प्रपोजल, साफ बोलती है कि इसने मुझे प्रपोज किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगले दिन वो उसको बोलती है कमरे में बुलाया, उसने मांग भरी एट द सेम टाइम। नहीं, वो कई दिनों उसने डेट नहीं बताई है कि हमने कब मना किया। उसने कोई डेट नहीं बताई। उसने तो कई बार आपने प्रपोज किया, उसने कई बार मना किया। But then you applied the another text. At that, my submission is that at the time of bail, the present applicant. No, Mr. Counsel, I am not inclined. He is under custody for more than 2.5. No. देखिए श्री सर, इसमें आफ्टर 4 वीक्स या तो कर दे, कुछ हो जाए, स्टेटमेंट हो जाए। तो हम कोशिश कर लेते हैं उनको शादी का प्रपोजल देके, इसलिए बोल रहा हूँ। ये कर लीजिए आप। तो इसलिए थोड़ा सा तो हम आपको लिबर्टी दे देते हैं ना, लिबर्टी दे देते हैं। आप अगर हो जाए तो आप दूसरी लगा देना। नहीं, बातचीत कर लेना। अरे हम प्रपोजल तो देना। अरे मैं लिबर्टी दे देता हूँ ना आपको कि आपके बयान के बाद लगा सकते हैं। सर अभी तो चार्ज फ्रेम नहीं हुए सर, बयान होने में तो अभी काफी टाइम लगेगा। अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए, मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको आफ्टर 2 वीक्स कर दे। मैं उनसे वो भी पॉसिबिलिटी बात कर लेता हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो एक दूसरे से बात कर लें, अगर शादी की पॉसिबिलिटी बन पाए। देखिए श्री एस के शर्मा, शादी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मैडम। शादी की संभावना अब नहीं है। जितना हो चुका है विवाद, ये शादी की। ठीक है, देखिए ऐसे भी मत अड़िए। इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देन सॉल्व इट, ठीक है ना जी? ठीक। प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकती तो उसको सॉल्व करिए, अपनी पर अड़िए मत, बात करिए बैठ के। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालिए, ठीक है? अपने मन से थोड़ा गुस्सा निकाल दीजिए। लेकिन इतना हो जाने के बाद शादी अगर होती भी है तो नहीं, खतरा है, लड़के को खतरा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा देखिए श्री एस के शर्मा, काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री
S.K. Yadav, learned Deputy Government Advocate for respondent state. Shri Uday Kumar and Deepchand Kori for objector. Uday Kumar and Deepchand Kori for and objector. Deepchand, learned counsel for the objector. Read by learned counsel for the applicant. List after this. वैसे अगर if he is ready to enter into wedlock, देखिए कंसीडर करिए क्या प्रपोजल आता है. My lord, this is first bail application, my lord. Offense under section 366, 363, 365, 364, my lord. As per the prosecution story, my lord, kindly see page number 8, my lord. विचारण न्यायालय के अभिलेख अनुसार परिवादी ईश्वरी गौतम ने थाना वाराणसी में इस आशय की रिपोर्ट लेकर कराई कि वह मिश्रा नगर कॉलोनी में निवास करता है। उसके परिवार में पत्नी 82, पुत्र नैतिक उम्र 11 वर्ष एवं दक्ष उम्र 7 वर्ष है। उसके दोनों पुत्र दिनांक 25/8/2022 को करीब 3:30 बजे स्कूल से प्रतिदिन की तरह छुट्टी होने के बाद वापस घर गए थे। करीब 4:20 बजे दोनों बच्चे खेलने के लिए नीचे उतरे। करीब 10 मिनट बाद उसका बड़ा पुत्र रोते हुए आया और बताया कि 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए थे और दक्ष का नाम लेकर बुलाए और शिव मंदिर के पास पीओपी वाले घर के सामने से जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठाकर रामपायली रोड कॉलेज चौक तरफ ले गए। वह तत्काल अपने पुत्र नैतिक को मोटरसाइकिल से लेकर कॉलेज चौक, दीनदयाल चौक व अन्य स्थान पर गया। तलाश करने के बाद घटना के संबंध में उसने परिचितों को अपनी जानकारी दिया। उसे फिर भी पता नहीं चला। फिर उसने पुत्र का किस व्यक्ति ने अपहरण किया है। उसके बाद उसने घर से किसी दूसरे कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जांच करने में देखा कि उसके पुत्र को 2 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर बीच में बैठाकर मोटरसाइकिल से ले जा रहे थे। तब उसने घटना की रिपोर्ट थाना वाराणसी में लेकर कराई। उक्त रिपोर्ट के पश्चात अनुसंधान के दौरान अपहृत बालक दक्ष को थाना भरवेली से दस्तयाब किया गया। दक्ष ने पूछताछ करने पर उसने बताया उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवेदक गण द्वारा सह आरोपी हेमलता के साथ मिलकर 7 वर्षीय दक्ष का उसके माता पिता से फिरौती वसूल करने के आशय से अपहरण किया गया था। My lord, in this case there is no demand, my lord, और ना ही हमारे से कोई सीज है my lord। उनसे my lord, इसके जो जिस गाड़ी से इसका गलत ही करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ आप बताइए क्या बताना। और as per the statement my lord, स्टेटमेंट ऑफ प्रियंका नागेश्वर इन स्टेटमेंट ऑफ 161 की उसमें उन्होंने ये कहा और इन्होंने जो है प्रियंका नागेश्वर के स्टेटमेंट में काइंडली रीड माय लॉर्ड ने बताया कि उपरोक्त पते पर रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। दिनांक 25/8 सेम डेट पे वो मिल भी गया था बालक। 25/8/2022 की घटना। तो अच्छा हुआ देख लिया था आपको तत्काल। नहीं इन्होंने देखा किसी देखा नहीं है माय लॉर्ड किसी ने। 25/8/2022 को रात 9 से 10 बजे की बात है होगी। मैं मेरे घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मैं उसके पास गई, मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने यूनुस खान, इतने में यूनुस खान जो भरवेली के भी रहने वाले हैं वो भी आ गए। बच्चे ने अपना नाम दक्ष गौतम, पिता ईश्वरी गौतम, उम्र 7 वर्ष, निवासी वाराणसी ने बताया। वह रोते रोते बोल रहा था कि एक भैया और एक दीदी ने उसे यहाँ छोड़ गए। मुझे जो भैया ने छोड़ गए इसमें सर जो इनकी जो लव अफेयर था, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में मिलकर के ये इनका रिलेशन है। जिसके बच्चे को इनने किडनैप किया था वो इनके रिलेटिव लगते हैं और उसके बाद इनकी योजना ये बनी कि उस बच्चे का किडनैप कर लेंगे और फिर उससे पैसे मांगेंगे। बच्चे का स्टेटमेंट है जो है 7 साल का बच्चा, उसका स्टेटमेंट आया है। मैं बेटा आपका नाम दक्ष है, आप कौन सी कक्षा में? फर्स्ट में पढ़ता हूँ। आपके पापा का नाम ईश्वर गौतम, आपको कौन लेकर गया? राजा भैया के साथ में एक और थे। आपको कहाँ ले गए थे? जंगल में। आपको कहाँ से लेकर गए थे? घर के सामने रोड पर पुल के पास से। क्या कर रहे थे? घुमाने का बोल करके आपने उन्हें घर जाने के लिए बोला। हाँ, बोल रहे तुम्हारे पापा पैसे दे देंगे तब हम तुम छोड़ देंगे। ये बच्चे का स्टेटमेंट है। और इसके बाद में जो इसमें राशि गौतम का स्टेटमेंट आया
राशि गौतम ने भी बताया है। मेरे पति दक्ष से पूछताछ करने वाले बताया कि घर के बाहर अकेला 2 भैया उसे गाड़ी घुमाने ले गए थे, घर के जाने को छोड़ दिए, जब मेरे पास पैसे देंगे तब तुम्हें छोड़ेंगे। बाद में पुलिस ने हट्टा क्षेत्र में अमन उर्फ आकाश विशेन, कृष्ण कुमार पटले, पीयूष मेश्राम, इनके गांव के पायल रहंगलाल को पकड़ा। तब उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को पैसे के लिए किडनैप किया था। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है सर, इसमें प्रियंका नागेश्वर के भी स्टेटमेंट में आया। 9-10 बजे मैं घर के बाहर खड़ी थी, एक बच्चे को रोने की आवाज आई, उसके पास गई, उसने पूछा। यूनुस खान जो बरेली के रहने वाले थे वो भी आ गए। बच्चे का नाम दक्ष ईश्वर गौतम बताया था। ये रोते रोते बोल रहा था कि भैया और दीदी ने उसे छोड़ कर गए हैं, जो भैया छोड़ कर गए हैं उन्हें एक भैया के साथ में वाराणसी मोटरसाइकिल लेके गए थे। तो ये बच्चे को लेके गए थे, फिर जब ये रोने लगा तो फिर ये छोड़ के गए थे। इसमें पीयूष मेश्राम जो इनके साथ में मिलकर के गया हुआ था, उसके स्टेटमेंट में वो रिलीज ऑन बेल माय, बट उसका जो है वो एज 15 साल की थी। जुनाइल था जो जुनाइल के उससे मिली थी उसको बेल। लेकिन ये 364A लगा हुआ है इसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तो कंडीशन करने की नहीं, डिमांड ही नहीं है, पूरे चालान भी ऑलरेडी फाइल हो गया। डिमांड नहीं पर केस ऑफ 364A, the boy is under 10 years of age and you have kidnapped him for ransom. इन्होंने माइलॉट किया है, ऐसा कहीं से कोई इंटायर चालान में कहीं से कोई प्रूफ नहीं हो रहा। बताइए भाई, इनको उनका कहना है कि सर मेमोरेंडम है हेमलता पायल का, हेमलता और पायल का। उसने लिखा कि इसी दौरान मेरी में हट्टा में रहने वाले अमन और आकाश विसेन, जिससे प्रेम संबंध हो गया था। करीब 1 माह बाद मैंने अमन वापस बालाघाट गए थे। पुराने किराए के मकान में साई लॉन की वाराणसी में था, वहां रहकर भारतीय सुराना नर्सिंग होम में काम करने लगी थी। अमन बालाघाट किराए के मकान में गंगा पुल पार रेस्टोरेंट में काम करने 10 दिन किराए से रहे। दिन अगेन मैंने 8-10 दिन पहले मैंने अमन को बोली थी कि मैं उस दिन तुम्हें अपने भाई चचेरे भाई के बच्चे को दिखाया था। वह भाई ईश्वरी गौतम ठेकेदार और भाभी भी सरकारी टीचर है। अपन लोग छोटे लड़के दक्ष को किडनैप कर लेते हैं, 20-25 लाख रुपए दे सकते हैं। तब मैंने अमन को दक्ष के किडनैप करने का प्लान बनाया और रोज उसे अमन मोटरसाइकिल वाराणसी छोड़ने जाता था। तब मैंने अमन को ईश्वरी गौतम का मकान दिखाई थी जहां बच्चे खेलते थे, वह जगह दिखाई थी। अमन विशेन जब मुझे छोड़ने और लेने जाता था, ईश्वरी गौतम घर में घूमता फिरता मिलता था। 24/8/2022 को अमन ने अपने गाँव के दोस्त पीयूष, जिसके स्टेटमेंट में आया है कोई एक्यूज के, मेश्राम को बालाघाट बुलाया। पीयूष ने 24/8/2022 को आकर के मोटरसाइकिल बैठाकर वाराणसी ले गए थे। अमन ने भारतीय सुराना नर्सिंग होम छोड़ दिया था। दोनों ईश्वरी गौतम घर तरफ गए थे। शाम को 4 बजे पीयूष मुझे लेने भारतीय सुराना आए, तब दोनों के साथ बालाघाट मोटरसाइकिल में रात में हम तीनों कमरे में रुके। अगले दिन दक्ष को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई। दूसरे दिन 25/8/2022 को सुबह 8:30 बजे प्लानिंग के तहत अपने काम को बस में रवानगी चले गए। करीब 2 बजे हमारे पीयूष साइकिल से पूरी तैयारी के साथ बैग में सामान लेकर वाराणसी पहुंचे। मुझे कमरे की चाबी देकर चले गए। शाम को अमन विषय ने फोन करके लगाया कि दक्ष को उठा लिया। हम लोग हट्टा पहुंचे। उसके बाद आपका सीसीटीवी फुटेज भी है, क्लियर है। आपका सीसीटीवी फुटेज भी है, आप किडनैप करके ले जा रहे हैं बच्चे को। सीसीटीवी फुटेज में वाला कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। उनका खुद ही का स्टेटमेंट है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो यह है इनका आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ। आइडेंटिफिकेशन परेड में भी इसको पहचाना बच्चे ने। हाँ, अब और क्या चाहिए आपको? एप्लीकेंट सारी चीजें पहचाना, एप्लीकेंट नंबर 1 को पहचाना। काइंडली सी टीआईपी माइलॉट, एप्लीकेंट नंबर 1 को पहचाना है। दोनों को सही पहचाना। नहीं, दोनों को नहीं पहचाना। भाई लिखा हुआ है, देख लीजिए आराम से देख लीजिए। मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, देख लो आप। दोनों में सही पहचान आ रहा है क्या? ये 6-7 साल का बच्चा था, 7 साल का है। हाँ। ये आप रिलेशन वाले एक रिलेशन को देखिए कितना होंगे सेम डेट पे। नहीं घुमाने ले गए, इनके पिताजी ठेकेदार है। इससे ये प्रूफ हो रहा है। अगर आप घुमाने ले जाते थे फिर तो घर के लोगों को बता के लेके जाते ना घुमाने ले जा रहे हैं। इसके अलावा फिर मास्क लगाने की, चेहरा छुपाने की आवश्यकता है? माइलॉट नो, नॉट इंटरेस्टेड। टीआईपी काइंडली से टीआईपी माइलॉट एप्लीकेंट नंबर 2 को उन्होंने पहचाना नहीं। इन्वॉल्व है सब। लाइक एप्लीकेंट नंबर 2 को काइंडली कंसीडर लास्ट में। लास्ट पैरा में दोनों आरोपी को
दोनों अतिरिक्त लोगों के साथ खड़े कर पर्याप्त सूर्य प्रकाश में कार्रवाई की गई। शिनाख्तीकर्ता नैतिक गौतम ने आरोपी आकाश द प्रेजेंट एप्लीकेंट नंबर 1 आकाश गौतम को पहचान की। शिनाख्ती द्वारा गौतम ने भी आकाश सुखचंद बिसेन को सही पहचाना। एप्लीकेंट नंबर 2 की कहीं बात ही नहीं है माय लॉर्ड, वो था ही नहीं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेंडम। ये केवल इसमें आकाश सामन को पहचाना है बस। और द स्टेटमेंट जो है माय लॉर्ड 161 मेमोरेंडम में सबकी उपस्थिति है ना, एक्सेप्टेड थी कि एक दीदी और एक भैया ने वहां छोड़ा था। इसका तो है मेमोरेंडम में उपस्थिति सबकी। मतलब अच्छा, फिर जो दूसरा उसका साथी है वो भी बता रहा है सब। क्या है? Whether anything had been discovered on the basis of the memorandum? हाँ? एप्लीकेंट नंबर 1 की आई वांट टू विड्रॉ माय लॉर्ड। कोर्ट डिसमिस कर रहा हूँ मेरिट पे, वरना आप फिर आ जाएंगे। एप्लीकेंट नंबर 1 की विड्रॉ नो, मेरिट पे दोनों डिसाइड करो। लिखिए, श्री संतोष मेश्राम, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, Shri Pramod Chowbe, Deputy Government Advocate for the respondent state. This first bail application under section 439 of CRPC has been filed on behalf of applicant Akash Ilyasaman and Krishna Patle. Next, applicants have been arrested in connection with crime number 336/22 of PS Bara Shimni, District Balaghat, MP, for commission of offence under section 353, 355, 354A and 120B of IPC. They are in jail since 26/8/2022. As per the prosecution story, on 25/8/2022, father of the little children lodged in a fire in PS Barashivni, stating that he is blessed with two sons, 11 years Natik and 7 years Dutch. They both are the student of Gurudev Public School. Full stop. Today, 25/8/2022, at around 3 p.m., both have returned from the school. At around 4:20 p.m., both child left the home for playing. Full stop. After 10 minutes, his elder son Natik, while beeping, came and informed that two boys riding on the motorcycle came and they called Dutch by calling his name and forcibly lifted her and sit on the motorcycle and have fled towards Rampali Road. Stop. At this, he, along with his son Natik, riding on motorcycle, searched for his son. Stop. His son Dutch had been taken by motorcycle riders. Dutch is wearing green color Bermuda and brown check t-shirt and slip. Full stop. It was further stated that in CCTV footage, two persons with covered faces were seen to taking away Dutch
FIR was registered. After investigation, charge sheet had been filed. Next, learned counsel for the applicant had submitted that applicants have not committed any offence. They have been falsely implicated. They are innocent. They had not kidnapped the boys. They had not kidnapped the 7-year-old boy. Therefore, it had been ordered that applicants be released on bail. Next, likhiye. 7-year-old Dutch in his statement has clearly stated that she was taken in a jungle by the two bhaiyas and we are telling that they will release him only after his father pays the ransom. Next, an identification for it, Dutch has identified applicant Akash Ilyasaman as perpetrator of the crime. Therefore, this first bail application on behalf of applicant Akash Ilyasaman is dismissed. Next, but as far as the second applicant Krishna is concerned, he has not been identified by Dutch in the identification for it. Therefore, having taken all the facts and circumstances, I am of the view that applicant Krishna Patel may be released on bail. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। कल जो है रजिस्ट्रार जुडिशियल के यहाँ उसका स्टेटमेंट हो गया कंप्लेनेंट का। आज के लिए माय लॉर्ड ने फिक्स किया था माय लॉर्ड, केवल उसमें फाइनल क्योंकि वो जेल में है माय लॉर्ड, 3 महीने से जेल में। लॉर्डशिप 65 नंबर पे है, 65 नंबर पे लॉर्डशिप 28 तारीख तक के लिए कॉल करना है। 157 में सिर्फ डायरी कॉल करना है। 157 3 साल की सजा है, 3 साल